chapter number 2, and chapter number 2 is structure of atom. So actually A is equal to mass number A equal to number of protons is Z plus number of neutrons. So that implies number of neutrons equal to A minus Z. Okay, and an element is represented as X, Z, either write it here or this is actually Z is atomic number, A is mass number, and X is symbol of the element. So these are the ways to represent an element. Okay, so now there are few terms like isotopes. You know that isobars, isonucleons, and isoelectronic species. These are most important in structure of atom. Okay, isotopes, isobars, isotones, and isoelectronic species. Isotopes are elements same atomic number but different mass number. For example, isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2, 1H3. 1H1 is called protium, denoted by P. 1H2 is called deuterium, denoted by D, and 1H3 is tritium. So these are isotopes of hydrogen. Isotopes of carbon, C12 and C14. Sometimes we write it as C12, C14 because you know C has atomic number 6. Because if it is written C, that is atomic number is fixed. Okay, so these are isotopes. Then come to isobars. Yeah, isobars. These are different elements having different atomic number. Yes, and same mass number A. Okay, for example, calcium and calcium is 20, 40, and another element having atomic mass number 40. Yes, tell me.
some cases it is 40. Okay, so with isotope of argon, if it is 40, then these are isotopes: calcium, potassium, argon. Okay, so these are isobars. Now come to isotopes. See, isotones, these are elements having same number of neutrons, or we can say, have same value of A minus Z, because A minus Z means number of neutrons, so those are called isotones. Any example? For example, 6C 14, 7 and 8O 60. So these are isotones, because 14 minus 6, 8, 16 minus 8, 8. Okay, so these are isotones. Most important part, isoelectronic. नाम से clear है. Iso means same, electronic means electron. So species having same number of electrons. The atoms or ions having same number of electrons, those are called isoelectronic species. Either the atoms, ions, group of atoms, molecules. Okay, for example, neon. So F negative, O 2 negative, N 3 negative, or Na plus, Mg 2 plus, Al 3 plus. All of them have same number of electrons, because neon has 10, fluorine 9 plus 1. Negative means electron is gained, positive means electron is lost. Okay, so 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, yes, 11 minus 1, 12 minus 2, 13 minus 3. So all have 10 electrons. So they are isoelectronic species. Same argon A plus, calcium 2 plus, scandium 3 plus, chlorine minus 1, sulfur 2 negative, phosphorus 3 negative. Again, they are isoelectronic species. All have 18 electrons. So these are called isoelectronic species. Particle. Okay. Here it is mass number. Then atomic number, protons, neutrons, electrons.
oxygen atom, calcium ion, oxygen atom, bromide ion. Okay. And bromide. Okay, this is the table. In this table you have to fill these masses. This is 16, 20, 8. Proton you have to fill 7, 20. Here you have to fill 45. Electron 7, 36. Yes. So fill it. It is your task. Okay, start. You know calcium is as per your 288 2, so it will lose 2 electrons. Get this 288. And bromine, you know halogens, they will gain only 1 electron. Okay, so the bromide ion is actually, can we write here? Yes, Br negative. This is simply oxygen. This is calcium 2 plus. This is nitrogen. It is neutral atom, so number of electron equal to number of protons. So it is 7, and number of neutron plus number of protons is equal to mass number, that is 7 plus 7, 14, and atomic number is same as that of protons. Calcium 20, protons 20, right? So 20 plus 20, mass number is 40. Okay. And what about electrons? Electrons, because it is calcium ion, so out of 20, because total electron it has 20, but 2 electrons are removed. So it is 18 now. Calcium 18, in calcium 20 electron, but calcium ion is there. So in calcium ion there are 18 electrons. Okay. What about bromide ion? See, electrons are 36, but Br is -1. So obviously its protons are 35, and so is the atomic number. So proton plus neutron is mass number. So it should be 80. Got it? Graph. Oh, this oxygen. Mass number is 16. Atomic number. So is the number of protons. So 16 minus 8, neutrons are 8. And electrons are also 8, because if it is neutral, then atomic number, protons and electrons are same. Neutrons are same by coincidence, they may be different, but atomic number, protons and electrons, they are same for a neutral atom.
next topic is electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation means the radiation which are associated with electric and magnetic fields which are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. The radiations which are associated with electric and magnetic field and these fields are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. ये देखो ऐसा this is one, let us take magnetic field, electric field, and this is direction of propagation. So all the three are perpendicular to each other. That is called electromagnetic radiation. Means electromagnetic radiation is one which associate itself with electric component and magnetic component. This electric component and magnetic component are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. Okay, and that is called electromagnetic radiation. Okay, done. So what are the properties related to it? Electromagnetic radiation can propagate in vacuum. Sound wave, any other, most of the waves need medium to travel, but electromagnetic waves can travel in vacuum, and in vacuum its speed of light is speed of electromagnetic radiation, that is fixed. Okay, and they are not deflected by electric and magnetic fields. ठीक है, अब देखो जैसे properties, first property is wavelength denoted by lambda. Yes, मुझे लग रहा है most of you know what is wavelength. See, if a wave is traveling, it has crest and trough, crest, trough, like this. Okay, so distance between two cross consecutive crests or consecutive troughs, that is called wavelength. Distance between two consecutive crests or troughs, that is called wavelength, and it is measured in centimeter, picometer, nanometer, and so on. Okay, angstrom,
So what is the value of 1 angstrom or 1 picometer, 1 nanometer? Convert 1 angstrom into meter. 10 raised to power minus 10 meter. 1 picometer, 10 raised to power minus 12 meter. 1 nanometer, 10 raised to power minus 9 meter. Like that. Hai na? Okay. Now come to frequency. Next is frequency, denoted by nu, and it is defined as number of waves, or we can say cycles, passing through a given point in 1 second. Number of waves or cycles. Cycle means one wave, one complete cycle means one crest, one trough. Okay, this is complete cycle. So number of cycles passing through a given point in 1 second is called frequency, and it is measured in hertz. Unit is hertz. 1 hertz is 1 cycle per second, or simply we write it as per second. Megahertz, gigahertz, that you know all. रेडियो में सुना होगा. Okay, that is called frequency. Okay, now next is wave number. Wave number is denoted by nu bar. It is denoted by nu bar, and it is equal to number of waves present in unit length. Means 1 centimeter or 1 meter. That means wave number is actually equal to reciprocal of wavelength. Nu bar equal to 1 upon lambda, and its unit is per centimeter or per meter. Per centimeter means number of waves present in 1 centimeter. Per meter, number of waves present in 1 meter. Right? So that is called wave number. Okay? Now speed. Speed that you know. Distance traveled by the wave per second. Distance traveled by wave per second. Okay? Distance traveled by the wave per second. For example, and speed of light is speed of electromagnetic radiation is fixed, and that value of speed, it is denoted by c, speed of light, it is fixed, that is 3 into
10 raised per 8 meter per second. Okay, then come to next. ये हो गया अपना speed. Now amplitude. Amplitude is denoted by capital A, and amplitude is height of crest or depth of trough. Height of crest or depth of trough, maximum height. This one. This is same, capital A. Okay, and intensity of light is proportional to A square. Amplitude square is determine the intensity of light. ठीक है, number of photons passing through. Intensity means number of light packets passing through a given point in 1 second. Okay, right. So now relation between frequency and wavelength, that is very important. So say, what is wavelength? That is the distance between two consecutive crusts or troughs. Or one wave means one complete wavelength, one crust, one trough give one wavelength, and time taken is to complete that wave is nu bar. So lambda into nu gives C. Lambda into nu equal to C. That is the relation between wavelength and frequency. That means if you know the frequency, you can calculate the wavelength, or if you know wavelength, you can calculate frequency. These are the three relations. Lambda into nu equal to C, lambda equal to C over nu, or nu equal to C over lambda. And C you know, 3 into 10 raised per 8 meter per second. Got it? Electromagnetic spectrum is arrangement of electromagnetic radiations in the order of increasing frequency, increasing wavelength, or decreasing frequency. Right? Arrangement of electromagnetic radiations in the order of increasing wavelength or decreasing frequency. For example, cosmic rays. Cosmic rays have shortest wavelength and greatest frequency. Okay, then gamma rays, then X-rays, then ultraviolet, then visible
infrared, then radio waves or microwaves, and last one is radio waves. So these are electromagnetic radiations in the order of increasing wavelengths and decreasing frequency. So this is called electromagnetic spectrum. Okay, so these are all electromagnetic radiations. Okay, so ये second topic हो गया हमारा. Okay, now third topic for the day is Planck's quantum theory. So first of all, what is quantum actually? So quantum is smallest packet of energy that a body can emit or absorb. That is called quantum. And in case of light, this quantum is called photon. लाइट के केस में is called photon, right? Now, what is this theory? So according to this theory, so first postulate of this theory is any body can emit or absorb energy in the form of small packets called quantum. Okay, and second is energy of quantum is proportional to frequency. Energy, let us take E, is proportional to frequency. That implies energy is equal to h nu. E equal to h nu. H is Planck's constant and its value is 6.626 into 10 raised to power minus 34 Joule second. This value is fixed. Planck's constant is fixed. Okay. So third is total energy absorbed or emitted by a body is equal to nh nu. That is, E total is equal to nh
nu. Here n is number of quanta. Means plural of quantum is quanta, and in case of light that is called photon. Means that is equal to number of photons in case of light. Okay. Now say as E equal to h nu, that is the energy of one quantum, one photon. So the nu is c over lambda. It can be written as E equal to hc over lambda, and 1 upon lambda is wave number, so hc nu bar. So these are the relations. E equal to h nu equal to hc over lambda equal to hc nu bar, right? वो लास्ट टॉपिक में हमने जो किया था उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे आज, ठीक है? तो there are relations lambda into nu equal to c, then E equal to h nu or nu bar, that is wave number equal to 1 upon lambda, and time period that we left, time period. So time period t, it is the time required by the wave to complete one wave. Time required to complete one wave. Time required to complete one cycle by wave, right? So time period is actually reciprocal of frequency. इससे related today we will do some questions, okay? So first question is, it is exercise question, that yellow light emitted from a sodium lamp. Okay, Mansi is there. Okay. Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. So calculate the frequency nu and wave number of the yellow light. तो देखो आपको वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 580 नैनोमीटर. आपको फाइंड आउट करना है एक तो वेव नंबर और दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? और देखो लैम्डा into nu that is equal to c and value of c is fixed. कितनी होती है 3 into 10 raised per 8 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी पर सेकेंड में, जो वेवलेंथ होगी मीटर में. तो
तो यहाँ वेवलेंथ है नैनोमीटर में, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर लैम्डा फाइंड आउट करोगे, और जो वेव नंबर होता है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये दो क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. So we use this formula, you know, lambda into nu equal to c. C value is fixed, that is 3 into 10 power 8 meter per second, and wave number is 1 upon lambda, reciprocal of wavelength. So first of all, frequency is equal to c over lambda. C is 3 into 10 power 8 meter per second divided by wavelength. So wavelength is actually 580 nanometer. So that should be 580 into 10 raised per minus 9 meter, because 1 nanometer is 10 raised per minus 9 meter. So it is 580 into 10 raised per minus 9 meter. तो कितना वैल्यू है? वैल्यू इज इट इज 5 पॉइंट, कितना है वैल्यू? किसी ने फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि देखो इसको 5 पॉइंट क्या 0.58 कर दोगे अगर, है ना, तो 3 ऑलमोस्ट 5 ही आएगा ही, है ना, और ये कितना हो जाएगा 14, 10 raised पर 14 पर सेकेंड मीन्स हर्ट्स, सो दैट इज 5.17 into 10 raised पर 14 हर्ट्स, क्योंकि 1 हर्ट इज 1 साइकिल पर सेकेंड, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन था वेव नंबर, सो दैट इज 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 580 into 10 raised per minus 9. वेव नंबर ऐसे आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.72, ठीक है। ये 0.5 करोगे तो इंटू 10 रेज़ क्या हो जाएगी 6 पर मीटर। समझिए कैसे, इसको 0.58 कर लो, अगर ये 1/0.5 होता तो यहाँ 2 आता, 0.5 करोगे तो 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -6, ऊपर जाके 10 की पावर 6, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ये वैल्यू लेस देन 2 होगी और ये 10 की पावर 6 पर मीटर। फाइंड द एनर्जी of each of the photons which corresponds to light of frequency 3 into 10 per 15 hertz. So first question where frequency is given to you, that is 3 into 10 raised per 15 hertz, and you know according to Planck's equation, Planck's theory, क्या होता है E equal to h nu, and what is the value of h? 6.626 into 10 raised per minus 34, right? Joule second into frequency is 3 into 10 raised to power 15 per second. Hertz is per second. So second per second cancel means answer is in joule. बोलो तो वैल्यू इज, जल्दी करो यार, 1.988 into 10 raised per minus 18 जूल। जो आंसर वो लिख रहा हूं मैं, है ना, राउंड अबाउट यू कैन राइट इट एज 2 into 10 raised per minus 18 जूल। So this is question number 1 of, well, first part of question number 2,
Then second one, energy of each of the photons which have wavelength of 0.5 angstrom. See, energy is equal to, h nu, but lambda is given, so nu is c over lambda, so it is hc over lambda, right? Now value of h, what is lambda? It is 0.5 angstrom, that is 0.5 into 10 raised power minus 10 meter. Convert angstrom into meter because all should be in SI units. तो ये हो जाएगा H is 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second. What is C? 3 into 10 raised power 8 meter per second divided by 0.5 into 10 raised power minus 10 meter. See, meter cancel, second per second cancel. So answer is in joule. 0.98 into 10 raised power minus 15 joule. Question is, calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave whose period is given. When period is given to you, that is time period is given, 2 into 10 raised to power minus 10 seconds. From time period you can calculate frequency, from frequency you can calculate wavelength, from wavelength you can calculate wave number. Just do it by your own, ये आप करोगे आप. So time period is given, so from time period we know frequency is equal to 1 upon time period, so it is 1 upon 2 into 10 raised to power minus 10, that is 1 upon 2 into 10 raised to power 10, so it is 10 by 2 into 10 raised to power 9, means 5 into 10 raised to power 9 seconds. Okay, then wavelength is equal to c over nu, because nu into lambda is equal to c, so c is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and frequency is per second, so 5 into 10 raised to power 9 per second, so that you have calculated. The value is 6.0, because if we take it as 30, so it becomes 5 6 30, so 10 power minus 2 meter, so sorry per second cancel, so answer is in meter. Then is wave number. So wave number is 1 upon lambda, so 1 upon lambda is 6.0 into 10 raised to power minus 2. So we have to calculate number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy, means total energy provided is equal to 1 joule. So you know total energy is equal to n h nu, where n is number of photons, n is number of photons, and h nu is energy of one photon.
energy of a photon. So that means to calculate number of photons, total energy is divided by energy of one photon. And what is the energy of one photon? H nu. Okay, that is, it is equal to E total over, you can write E, energy of one photon, right? And that is equal to H nu. But wavelength is given to you, right? So to calculate E, total energy is 1 joule, is H nu, that is equal to Hc over lambda. Lambda is given to you 4000 picometer, and 1 picometer is how many meters? 10 raised to power minus 12 meter. Your first task is to convert nanometer, angstrom, picometer into the basic unit, SI unit, meter. Okay, so it is actually 4 into 10 raised to power minus 9 meter. Okay, so energy E is equal to H, it is 6.626 into 10 raised to power minus 34. E, energy speed of light, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This is joule second, this is meter per second, and lambda is 4 into 10 raised to power minus 9 meter. So meter cancel, second per second cancel. This energy of one photon comes in joules, 4.97 into 10 raised to power 1734 minus 17 joule. This is energy of one photon. This is total energy. So number of photons. So number of photons n, that is number of photons of light with wavelength 4000 picometer that provide 1 joule of energy, that is equal to total energy divided by total energy divided by energy of one photon, right? So total energy is 1 joule and energy of one photon is 4.97 into 10 raised to power minus 17 joule. So number comes out to be, say, 1 upon 4.97. 1 upon 5 means if it is point here 10 to the minus 16, so it is 2 into 10 raised to power 16. 7, you can take it as 5. Okay, then it is 2 into 10 raised to power 16. So these are the number of photons of light which provide energy of 1 joule. Okay, electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just
sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. Answer should be in kilojoule per mole. Ionization means, or ionization energy means sodium gas, sodium in gaseous form, okay? Sodium gas to give sodium positive gas plus electron. So it is written electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer. It is just sufficient. What is the energy possessed by the photon? One photon can eject one electron. Keep in mind, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक फोटोन चाहिए हमें, उसकी एनर्जी के बराबर होने चाहिए. That is just sufficient to ionize the sodium atom. आयन बनाना है सोडियम का. So one electron is removed. So to remove this ion, that energy is called ionization energy. What is ionization energy? Amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom. Why this isolated and gaseous atom? Because that is free from all types of interactions. Gaseous atom is free from attraction of other atoms, right? So sodium should be in gaseous form, sodium positive gas plus electron. So this energy which is used to remove the electron, that is called ionization energy. Okay? So that is energy of one photon. So first I'd like the definitions, okay? First, what is ionization energy? Required to remove an electron from an isolated gaseous atom. This isolated and gaseous atom means the atom which is free from all types of attractions or repulsions, right? So that is gaseous, okay? So ये जो energy होगी, that is called ionization energy, okay? And how much energy is required to remove the electron? It is just sufficient, this wavelength is just sufficient to ionize this sodium atom. So one photon can eject one electron. Eject means to remove. One photon can eject one electron. But energy should be in per mole. Means energy is required for 1 mole of electrons. Okay? So first of all we calculate energy of one photon. That is sufficient to remove one electron. Right? So energy of one photon, that is h nu, and that is equal to hc over lambda. Lambda is 242 nanometer.
of lambda equal to 242 nanometer. That is 242 into 10 raised per minus 9 meter. Right? So just put the values. It is 6.626 into 10 raised per minus 34. It is 3 into 10 raised per 8 meter per second divided by 242 into 10 raised per minus 9 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, जूल में आंसर आ जाएगा. बोलो कितना आया? वैल्यू लिख रहा हूं 8.21 into 10 raised per minus 19 joule. This is energy of one photon. So this is energy required to remove one electron. Okay? अब हमें क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल. ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, बट इट इज जूल पर एटम. एक एटम के लिए हुआ ना ये एनर्जी, ठीक है ना? ओके, तो अब हम पर मोल में पहले फाइंड आउट करते हैं, है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स कितने हो जाएगी? 8.21 into 10 raised per minus 19 joule into 6.022 into 10 raised per 23. कितना पकड़ो नंबर पर मोल, है ना? तो वैल्यू आ जाएगी 6.023 भी लेते हैं, 22 भी लेते हैं, तो 494 into 10 raised per 3 जूल पर मोल. ठीक है? तो किलो जूल में कितने आ जाएगी? 494 किलो जूल पर. समझ गए? क्योंकि देखो उसने ऐसा नहीं लिखा था कि एक मोल के लिए निकालो, बट उसने यूनिट ऐसे दे दी. क्या लिखा उसने? कि आयोनाइजिंग एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इन किलो जूल पर मोल, ऐसा लिख के दे दिया. तो इससे क्लियर हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये है, एक सोडियम एटम के लिए तो ये है आयोनाइजिंग एनर्जी, बट हमें किसमें चाहिए? एक मोल की. तो एक मोल के लिए हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. एक एटम के लिए जितनी होगी तो एक मोल के लिए कितनी होगी? मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो जूल में आंसर आ गया पहले, पर आंसर निकालना था किलो जूल पर मोल. तो 10.3 जूल इज 1 किलो जूल. सो ये किलो जूल पर मोल में आंसर आ गया अपने पास. गॉट इट? सिक्स्थ क्वेश्चन राइट डाउन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज a 25 watt. आई थिंक आप ये पढ़ के आए होंगे लोअर क्लास में. वॉट क्या होता है ना? 25 watt बल्ब emits monochromatic yellow light monochromatic means which has only a single wavelength. Yellow light has range of wavelengths. Okay, polychromatic light means which has a range of wavelengths, and monochromatic means which has single wavelength. Only one wavelength is there. Okay, so a 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength. What means power? Yellow light of wavelength (0.57 micrometer). Calculate the rate of emission of
rate of emission of quantum per second. Okay, chalo. Actually, watt means joule per second. How much energy is released per second? That is called watt. So it is actually 1 watt is 1 joule per second. 1 watt is equal to 1 joule per second. Okay, so it is 25 joule per second. तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज 25 जूल पर सेकेंड. सो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने फोटोन, क्वांटम इज लाइट के केस में इसको क्या बोलते हैं, फोटोन. तो कितने फोटोन पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं वो फाइंड आउट करना है. सिंपली वही क्वेश्चन है पीछे वाला. टोटल एनर्जी इज 25 जूल इन 1 सेकेंड एंड कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, divide them, we get number of photons emitted per second, right? Because this is the total energy emitted per second. Just do it by your own. 25 watt means total energy which is emitted is 25 joule per second. Okay, and energy of 1 photon that is equal to hc over lambda. So lambda here is 0.57 micrometer, means 0.57 into micro means 10 raised to power minus 6 meter. Is it visible? Yes. So just put the values. 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. C 3 into 10 raised to power 8 meter per second and divided by 0.57 into 10 raised to power minus 6 meter. Again meter, second per second, so answer should be in joule. So energy of the photon comes out to be, yes, anybody? It is 3.487 into 10 raised to power minus 18 joule. Okay, now to calculate rate of emission of quantum per second, rate of emission of photon per second, that is equal to total energy emitted per second divided by energy of 1 photon. So total energy emitted per second is 25 joule. Okay, and energy of 1 photon 3.487 into 10 raised to power minus 18. So what is the value? It comes out to be, it is joule per second and it is joule. So value comes out to be 7.17 into 10 raised to power 19 per second. That is the answer. Okay, same question, only it is rate. In that case, that is number of photons in 1 joule that we have calculated. Same in the case here,
it is number of photons emitted per second. It is actually number of photons, but number of photons emitted per second. Right? Today's topic is Bohr's model of atom. Bohr's model of atom, उससे पहले आते हैं Thomson's model of atom, Rutherford model of atom, that you have covered in class 10th, right? And it is eliminated from the class 11 syllabus. Bohr's model of atom. तो बोर मॉडल ऑफ एटम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जो कि मॉडर्न टाइप का, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर की, बट उसकी जो मेन पॉइंट था, इट इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वो एप्लीकेबल था. सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया उसने, बट उसकी जो मेन पॉइंट था वो वन इलेक्ट्रॉन के लिए, वन इलेक्ट्रॉन वाले जैसे हाइड्रोजन एटम या बेरिलियम, हाइड्रोजन एटम, या अगर हीलियम हो तो हीलियम के लिए भी होगा, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस, इनके लिए एप्लीकेबल था. इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus. क्या उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है they are revolving around the nucleus in circular paths. These are actually well defined पाथ्स. है तो सर्कुलर पाथ्स, वो सर्कुलर पाथ्स क्या है, वेल डिफाइंड. ऐसा नहीं कि कोई भी सर्कल खींच दिया और वो बन गया पाथ, ठीक है. दीज आर वेल डिफाइंड, ठीक है. एंड एनर्जी, वेल डिफाइंड पाथ्स having fixed radius and energy. उनकी fixed क्या थी, radius and energy. These paths are called एनर्जी लेवल्स. क्या बोला उनको, एनर्जी लेवल्स. और ऑर्बिट्स और शेल्स. बट ये जो ऑर्बिट्स है नाम, ये तो पहले भी देख चुका था रदरफोर्ड, ठीक है. उसने बोला है दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स. क्या बोला उसने उसको, उनको उसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स. स्टेशनरी स्टेट से क्या मतलब था उसका, कि जब तक वो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, मतलब ये न्यूक्लियस है, राइट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, second orbit, third orbit, and so on. First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, ठीक है. तो ये जो पाथ्स हैं सर्कुलर है, एलिप्टिकल सा लग रहा है, बट दे आर सर्कुलर पाथ्स. तो
when electron is revolving in these orbits या shells या energy levels या stationary states, its energy remains same as long as it is revolving in the same shell, its energy remains stable. इसे उसको बोला उसने, they are called stationary states, के इलेक्ट्रॉन के मूव करने से उसकी एनर्जी पे, टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा. मान लिया इसकी एनर्जी है E1, तो इट रिमेन्स E1, दो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इसकी एनर्जी मान लिया E2, E3, E4, सो एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड. ये फर्स्ट पॉइंट का अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि व्हाई दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स, तो आंसर लिख सकते हो आप. ओके, पॉइंट नंबर 2, द एनर्जी जो है ऑफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in its orbit does not change with time. सेम बात वही होगी ना कि स्टेशनरी स्टेट है वो, इसलिए उसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन इट्स ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया. नाउ थर्ड, when a certain amount of energy is absorbed by the electron, then क्या होगा? अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी, कितनी? डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, कम से कम इतनी एनर्जी. ऐसा नहीं हो कि ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और यहां तक पहुंचे, यहां तक, जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. देखो ये फैक्ट देख लो. हम क्या सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेता रहेगा, थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा और यहां पहुंच जाएगा कभी ना कभी. ऐसा नहीं, वो एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगा? जब उस पे जो एनर्जी फॉल करेगी, जो फोटोन बताया था, वो फोटोन फॉल करेगा तो वो इतनी एनर्जी दे दे कि इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, या इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, या इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा. इसलिए लिखा है when a certain amount of energy is absorbed by the electron, then it jumps from lower orbit to, yeah, lower energy level to higher एनर्जी लेवल. लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे वो शिफ्ट कर जाए, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स कि जितनी एनर्जी उसको शिफ्ट करने के लिए चाहिए ऊपर, मान लिया 1 से 2 में गया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, सो 1 से 2 में चला गया. ठीक है, अब अगर वो 2 से 1 में आएगा तो उतनी ही एनर्जी क्या करेगा? रिलीज. तो अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉल
जंप्स की जगह हो जाएगा फॉल्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये नोट कर लिया ना। तो मैथमेटिकली तो पहले लिख लो कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन is equal to energy difference between two energy levels. Energy difference between two energy levels. That is, if E1 is energy of lower shell and E2 is energy of higher shell, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अगर हम डिनोट करें इसको डेल्टा ई, and mathematically delta E is equal to E2 minus E1, right? That means if electron jump from lower level to higher level, then energy absorbed is equal to energy difference between the two levels, मतलब E2 minus E1. See, ये जो अपने एनर्जी लिखा है डेल्टा E equal to E2 minus E1, it is related to a particular frequency according to Planck's equation. E equal to h nu. It is related to a particular wavelength, nu equal to c over lambda. It is related to particular wave number. Okay, this is delta U. Change in energy. Energy absorbed in case electron jumps from lower level to higher level, and this is also the energy difference. Energy when energy released when electron falls from higher level to lower level. कितना कौन सा पॉइंट हुआ ये? पॉइंट नंबर थर्ड. Okay, then fourth, the energy levels, the different energy levels, different, ठीक है ना, different are represented as K, L, M, N for n equal to 1, 2, 3, 4 respectively. That is, K shell means first shell, L shell means n equal to 2, M shell n equal to 3, N shell n equal to 4. K, L, M, N. Right? Now, point number 4.
That is very very important. Because only those orbits are permitted in which angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi. Very very important. Only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यस, angular momentum is mvr. Angular momentum is equal to m. Linear momentum is m into v, and angular momentum is m into v into r, and that is equal to integral multiple of h upon 2 pi, where n is 1, 2, 3, 4, so on. Right? And m is mass of electron, v is tangential velocity, means linear velocity of electron, r is radius of orbit. Okay, so mvr equal to nh upon 2 pi. And what is h? What is h? H is Planck's constant, and its value is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. Okay, and that you know, h value is this, mass of electron you know, velocity depends on the n shell number, radius also depends upon shell number, that we will sort out. Okay, तो ये हो गए अपने 5 points. Now sixth one. Actually now we talk about energy. सबसे पहला पॉइंट क्या था कि electrons are revolving around the nucleus in very defined paths. There are circular paths, very defined circular paths, having fixed energy and radius. Radius भी फिक्स है और एनर्जी भी फिक्स है, और ये एनर्जी और रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एन पे. ठीक है, तो वो हम एनर्जी के लिए अब डिराइव करेंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी is the energy of stationary state. Energy of the stationary state. ठीक है, and that energy is equal to minus RH. I will write it as Z square N square. Actually Z is 1 for hydrogen atom, but I am extending it to
hydrogen-like atoms. See, for in general it is written as minus RH into 1 upon n square, because Z is 1, but Z is 1 only for hydrogen atom. But these are called hydrogen-like atoms. These are hydrogen-like atoms. For them, see, Z is 1. Sorry. Helium plus Z is 2. For lithium, 2 plus Z is 3. For beryllium, 3 plus Z is 4. For boron, Z is 5. Right? So, better to write like this. This is general, right? And RH is called Rydberg constant. Very important point. Rydberg constant, and its value is 2.18 into 10 raised per minus 18 joule. Its value in joules is 2.18 into 10 raised per minus 18. Okay? And then what is Z? Atomic number of species. Why I write species? Because these are hydrogen-like atoms. Okay? Then N shell number 1, 2, 3, K shell, L shell. We have written K, L, M, N, then O. Okay? And 1, 2, 3, and 4. Now, the point that this is the energy which is fixed, so that means energy is absorbed or released, not continuously but discontinuously in the form of bundles, packets, and those are called quantum. So he used first time the quantum theory, Planck's quantum theory. Bohr's model used Planck's quantum theory first time, because he said that orbits are, shells are, energy levels are, stationary states are quantized. Okay? So energy is, as energy is fixed, so energy is absorbed or emitted or released, not continuously but discontinuously in the form of packets called quantum or photon in case of light. Photon in case of light. This means electron cannot move continuously. Move means not like this circular path. Cannot move from one level to
another level, cannot move continuously, but can jump. But can jump. Okay? From one energy level to another energy levels. The energy of the electron is quantized. In the same way as that of angular momentum. से आपने दो इक्वेशन लिखी. फर्स्ट इज mvr equal to nh upon 2 pi. See, angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. You know, h is constant, 2 pi is also constant. So it is 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, depending on n. Same is the case here. Energy that is equal to minus RH z square over n square. For particular atom, z is fixed. For particular shell, n is fixed. RH is constant. But as n varies, energy varies. So energy of the nth orbit depends upon n. As n changes, energy changes, but in quantized way. It is not increasing continuously. Now, let me tell you what it signifies. See, Z is positive, it is atomic number, N is 1, 2, 3 positive, RH is, you see the value 2.18 into 10 raised per minus 18 joule, that is also fixed, that is joule per atom. Keep in mind, RH is, that is joule per atom. Okay? So what it means? Negative means as En equal to minus RH z square n square. This means electronic energy is always negative. Means electronic energy is always negative. समझ में आया? Energy of the electron in an atom is always negative. बहुत important चीज है. If question is there कि what is the energy of an atom, energy of an electron in an atom, so that is always negative. So what this negative signifies? See, this is nucleus, and so on, n equal to 1, 2, 3, 4, so on, n equal to infinity. One more thing. How many shells are possible in an atom? Tell me. How many shells are possible in an atom? For all beta, stationary position, there are no stationary position.
These are stationary states. Stationary states means energy of the electron remains same when it is in the particular shell. Means it cannot jump from one shell to another, or it cannot fall from one shell to another. As soon as it is traveling, it is moving in the same shell, its energy remains constant. That means that's why term stationary is used. This is first time told by Bohr, because Rutherford failed to explain that when a charged body is moving around another charged body, oppositely charged body, then why this electron cannot lose energy. So इसने खत्म ही कर दिया काम कि when electron is revolving in the same shell, as long as it is in the same shell, its energy remains same. It is fixed. That's why that is called stationary state. First a stationary state, second stationary state, third. But wherever it is, its energy is negative. Why is it so? See, when we put n infinity, what is the value of energy? Tell me. What is the value of energy if I put n infinity? Then it is inverse. When n is infinity, energy is 0. That is defined. First of all, how many shells are possible? Infinite. For a particular atom, how many shells? For a particular electron in an atom, how many shells are possible? Infinite. Right? That is the first answer. Second, energy of the electron at infinite shell is 0. Energy of the electron at infinity. Infinity means it is completely removed from the atom. That is called free electron. When we provide such amount of energy, huge amount of energy, that it is free from the attraction of the nucleus. न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जैसे जैसे दूर जाएंगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम. कोई भी चीज हमसे दूर जाएगी तो उसका हमारे लिए अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? डिक्रीज. सेम इज द केस विद एटम. When electron is moving away from the nucleus, then attraction of the electron towards the nucleus, or we can say attraction of the nucleus towards the electron decreases. So it goes on decreasing. So at infinite, there is no attraction between the nucleus and the electron, and that is called free electron. So for a free electron, its energy is supposed to be 0. It is not 0. It is supposed to be 0. As it is supposed to be 0, so when it comes in attraction with the nucleus, so when they attract any two particle, any two charges, opposite charges, when they attract each other, what would happen? They release energy or they absorb energy. Energy is released. Okay? So that is the theory behind it. Okay? For an electron at infinity, energy of electron is supposed to be एक इसका आंसर लिख रहा हूं मैं. If question is why electronic energy is always negative, so you start with कि for electron at infinity, energy of electron is supposed to be 0. Now when this electron is in attraction with
nucleus of an atom, means when this electron is in the atom, then it releases energy. So its energy becomes less than 0, because we suppose its energy to be 0 at infinity. So when it comes in connection with the nucleus, its energy is released. So energy is released from 0, so its energy becomes less than 0. So electronic energy is always negative. Electronic energy is always negative, right? So that's why electronic energy is always negative, because its energy at infinity is supposed to be 0. So when it comes in contact with the nucleus, when electron is in the atom, obviously when electron is in the atom, it is in attraction with the nucleus. So due to the attraction, energy is released. That's why electronic energy is less than 0. Say this is the relation RH Z square over N square, right? So when it goes up, then its energy becomes less negative. But it is negative. It becomes less negative because maximum value is 0. Keep in mind, maximum value is 0, right? So you can write point number. How many points we have written? कितने points लिखे थे बेटा? I think we have written points 6. ठीक है? So you can write 7 point कि as n increases, energy of the electron increases. Means its energy becomes less negative. It becomes less negative, right? That means E1 is less than E2, E2 is less than E3, E4, E5, so on. Okay? Next point is, as n increases, energy difference between two energy levels decreases. That is also very important point. Means E2 minus E1 is greater than E3 minus E2, which in turn greater than E4 minus E3, greater than E5 minus E3, and so on. As n increases, energy difference between the two energy levels decreases. First level at this point, second level, third level, fourth level, fifth level,
means as we go up, energy difference between the two levels goes on decreasing, and at the end it becomes continuum. Continuum means बिल्कुल energy difference minor हो ही ना. This is E1, E2. See, energy difference is huge, but E2, E3 it becomes less. E3, E4 still less. E5, E6 and so on. See, energies are increasing. Energy is increasing, but energy difference is decreasing. Okay, time. So let's see, in a hydrogen atom, an electron jumps from third orbit to the first orbit. So you know what is the energy first? Energy is equal to energy released actually. In this case, energy is released. So energy released is equal to E3 minus E1. E3 minus E1. We go higher to lower. Higher minus lower. Okay. So and this is minus RH because it is hydrogen atom. So Z is 1 and third level means 1 upon 3 square minus RH into 1 upon 1 square, 1 square, 1 square, right? Z is 1 and here 3, 1. Okay, so it is minus RH, take it as common, sorry, take RH as common. Okay, so it becomes 1 upon 9 minus 1, it is minus plus, so it becomes 1 minus 1 upon 9, right? This become R minus plus, so RH is common, so it is 1 and this is 1 upon 9, so it becomes RH into 8 upon 9. And what is the value of RH? RH is 2.18 into 10 raised power minus 18 joule. So just put the value and get answer in joules. Then you know energy is equal to H nu. So what is nu? Delta E over H. Delta E, you have H, you know what is H? 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second. That's it. Right? So just solve it. Achievement of Bose model of atom. Okay, right. So achievement है, first achievement है कि Bose model has explained successfully the stability of atom. एक्चुअली जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्क्राइब किया था तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था कि उसने भी ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स. बट वहां पे दिक्कत क्या थी, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो रेडिएशन थ्योरी जो थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसने बोला कि जब एक नेगेटिव चार्ज बॉडी is traveling or moving around positive, then there is an attraction, and because of that attraction it is coming closer and closer to the nucleus and ultimately fall into the nucleus. So atom is actually unstable. ये जब रदरफोर्ड ने अपनी थियरी दी थी तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ रेडिएशन थी
इसको थियरी ऑफ रेडिएशन भी बोलते हैं। तो उसने बोला कि एक कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, तो एटम इज कोलैप्स्ड, एटम इज अनस्टेबल, है ना। बट बोर ने इस चीज को बिल्कुल मींस क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट देके उसको एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन? ये न्यूक्लियस है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक इस शेल में मूव कर रहा है तो उस शेल में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा एज लॉन्ग एज इट विल नॉट एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। चाहे और कितने भी शेल होते रहे अंदर बाहर, पर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो वो इसी शेल में रहेगा एंड इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस शेल में उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो मूव करता रहे कितना भी, ठीक है। उसकी एनर्जी फिक्स होगी, उसकी रेडियस फिक्स होगी शेल की, उसकी एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, है ना, ये वाला था ना। तो उसने बोला कि ये सारी चीजें फिक्स होंगी और ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इस शेल से इस शेल, और फॉल करेगा जब एनर्जी रिलीज करेगा। बट अगर वो एक शेल में है तो जब तक वो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज नहीं करता है उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से उसने एक्सप्लेन कर दिया कि एटम इज स्टेबल। तो ये पहली अचीवमेंट थी बोर मॉडल की। ये पहला ऐसा मॉडल है जिसने एटम को स्टेबल जो था, एटम स्टेबल ही है। क्यों स्टेबल है उसके लिए उसने एक फैक्ट दी, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दी, उसको क्वांटम थ्योरी यूज की, ठीक है। तो उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, मतलब थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया कि थ्योरी ऑफ रेडिएशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जब मूव कर रहा होगा तो उसका ट्राई होगा टू गो आउट, क्योंकि टेंजेंशियली जाना चाहता है ना हर चीज। कोई पत्थर घुमाते हैं तो उसको छोड़ते हैं तो कैसे जाता है वो सीधा, तो बोलता है कि वो एक फोर्स इधर लगेगी और दूसरा न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये इनर फोर्स और आउटर फोर्स दोनों बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगा आपको, बट आज हम सिर्फ अचीवमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बोर्स मॉडल, कल जो किया था दैट इज पोस्टुलेट्स, मतलब डे बिफोर यस्टरडे के पोस्टुलेट्स क्या थे, आज हम कर रहे हैं कि उसके क्या सक्सेस स्टोरी थी, बोर्स मॉडल कहां कहां सक्सेसफुल हुआ और कहां वो फेल हुआ, लिमिटेशन उसकी करेंगे और उसके अचीवमेंट्स। तो पहली अचीवमेंट क्लियर होगी कि इट कुड एक्सप्लेन, ठीक है, इट हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बोर्स मॉडल has been used to derive Balmer formula। ठीक है, या बाल्मर फॉर्मूला, बाल्मर फॉर्मूला बोलो इसको, क्योंकि उसने क्या बोला था कि एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। मैं जेड बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन के लिए नहीं कर रहे हैं हम, जनरल कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। मतलब ऑल वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। तो Z इज 1 फॉर हाइड्रोजन, Z इज 2 फॉर हीलियम प्लस, Z इज 3 फॉर लिथियम 2 प्लस, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये फॉर्मूला एक्चुअली में माइनस आर एच जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज
इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 टू n2। इलेक्ट्रॉन जंप करता है n1 शेल से n2 शेल पे। n1 है और n2, ठीक है। तो E n1 इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वेयर ओवर n1 स्क्वेयर, और E n2 इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वेयर ओवर n2 स्क्वेयर, ठीक है। E n1 आ गया, E n2 आ गया। सो व्हाट इज डेल्टा E नाउ? ओके, सो फ्रॉम हियर नीचे लिख सकते हैं, बेटर टू राइट अब डेल्टा E इक्वल टू E n2 माइनस E n1। ओके, नाउ E n2 इक्वल टू माइनस RH इंटू जेड स्क्वेयर ओवर n2 स्क्वेयर माइनस RH इंटू जेड स्क्वेयर ओवर n1 स्क्वेयर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा E इक्वल टू माइनस, सॉरी RH कॉमन, ठीक है। और यहां पे देखो ये माइनस ही रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, यहां इस फॉर्मूले से क्या पता चला हमें कि ये डेल्टा E जो है पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना। तो इसमें n2 शुड बी ग्रेटर देन n1, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर n2 ग्रेटर देन n1 होगा तभी डेल्टा E पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो जंप कर रहा है, ठीक है ना, तो n2 इज ग्रेटर देन n1। ये वाला पार्ट स्मॉल ही रखना है और ये लार्जर वन, क्यों? ताकि ये डेल्टा E पॉजिटिव आए। अगर ऐसा होता है तभी आएगा ना साहब, क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि डेल्टा E नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आए भी डेल्टा E तो इसका मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। बाई चांस आपने इनपुट किए और डेल्टा E आया नेगेटिव, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही लेना है आपको, याद रखना। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। ओके, तो यहां से RH की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो डेल्टा E comes out to be 2.18 into 10⁻⁻18 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square जूल पर एटम। ये जो है ना, ये आ गया अपने पास एनर्जी का वैल्यू। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। ये आ गया अपना एनर्जी एब्सॉर्ब, क्योंकि हमने बोला जंप किया हायर लोअर लेवल से हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, n1 से n2 जंप कर रहा है, ठीक है ना। तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एब्सॉर्ब। ये En2 हो गया, ये En1, सो दैट इज En2 माइनस En1। ऐसे किया ना हमने। अब एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इज दिस, ठीक है, दिस इज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। नाउ व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इट हैज certain frequency, it has certain wavelength, it has certain wave number, ठीक है ना।
वैल्यू आएगी, देखो तो डेल्टा ई जो है यू नो दैट इज इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा है आपने, ई इक्वल टू एच न्यू प्लैंक्स इक्वेशन. सो एज पर दिस इक्वेशन न्यू इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एच. सो फ्रीक्वेंसी of absorption of radiation nu is equal to delta E. What is delta E? This one 2.18 into 10 raised per minus 18 divided by h. H is Planck's constant. Its value is, याद रखना, 6.626 into 10 raised per minus 34. क्या होता है? जूल सेकेंड. दिस इज जूल सेकेंड 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square जूल पर एटम. लिखा था है तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा. जूल पर एटम इसलिए लिख रहा हूं कि अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट आप याद रखना कि एक एटम के लिए वैल्यू है ना. एनर्जी की वैल्यू जो जूल आया, इट इज फॉर वन एटम. ठीक है ना. ओके, अब तो ये इसको सॉल्व करें तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 3.29 into 10 raised per 15 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square hertz. क्योंकि पर सेकेंड जूल से जूल कैंसिल है ना, पर सेकेंड आएगा ना. और पर सेकेंड क्या होता है? पर सेकेंड इज 1 हर्ट्ज. ठीक है, दिख रहा है ना सारा. ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई अपनी. ठीक है, अब एनर्जी की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई. अब वेव नंबर. Wave number is denoted by nu bar and that is equal to 1 upon lambda, और बोलो ये पढ़ा था nu into lambda equal to c, और so nu equal to c over lambda, so 1 upon lambda equal to nu over c, and that is wave number. Wave number equal to 1 upon lambda, that is equal to frequency over speed of light. Speed of light की वैल्यू पता है आपको, 3 into 10 raised per 8 मीटर पर सेकेंड है ना. तो ये आ जाएगा frequency over c. Frequency is 3.29 into 10 raised per 15 over 3 into 10 raised per 8, it is meter per second. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square, और क्या था ये? हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड. क्यों पर सेकेंड लिखा? क्योंकि पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, तो पर मीटर में आंसर आ जाएगा ना. सो वैल्यू जो आती है दैट इज 1.09677 into 10 raised per 7 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square पर मीटर. तो ये आ गया अपना वेव नंबर. तो हमने फाइंड आउट किया एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड. दूसरा किया हमने
frequency of the radiation absorbed or released, wave number of the radiation. ठीक है, ये तीन हमने डिराइव की रिलेशंस, है ना, और इनको सबको बोलते हैं बाल्मर्स फॉर्मूला. ठीक है, एक्चुअली बाल्मर फॉर्मूला में n1 इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है, तो ये सिंपल रिडबर्ग फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसको, रिडबर्ग फॉर्मूला और बाल्मर फॉर्मूला. ठीक है, इन सबको तीनों. तो एक बार फिर मैं अच्छे से लिख देता हूं इनको, है ना. जो आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू, देखो आपको जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो यू विल नॉट डिराइव इट, है ना, यू शुड रिमेंबर इट. फर्स्ट रिलेशन था एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, दैट इज 2.18 into 10 raised power minus 18 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ठीक है, into z square जूल. ठीक है, दूसरा जो रिलेशन था फ्रीक्वेंसी का था, दैट इज 3.29 into 10 raised power 15 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square हर्ट्ज. ठीक है, और तीसरा जो रिलेशन था वो था वेव नंबर 1 upon lambda, that is 1.09677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square पर मीटर. यही अगर पर सेंटीमीटर होगा तो सॉरी 1.09677 into 10 raised power 7. ठीक है ना, और यही अगर पर सेंटीमीटर होगा तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा. तो ये तीन रिलेशन जो है बहुत ही काम के हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हो. ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज सेकंड रिलेशन एंड दिस इज थर्ड रिलेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां पे अगर पर सेंटीमीटर होगा तो याद रखना ये वाला टर्म जो है 10 raised to power 5 हो जाएगा, 10 power 5 पर सेंटीमीटर है ना, इसलिए ये 10 की पावर 5 हो जाएगा. राइट, सो दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बोर्स मॉडल. ठीक है, तो ये भी इसकी एक अचीवमेंट है बोर्स मॉडल की, कि उसने डिफाइन कर दी कि एनर्जी कितनी है ना, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका वेव नंबर क्या होगा. ठीक है ना. ओके, थर्ड तो थर्ड है बोर्स थ्योरी has helped in calculating energy of an electron in hydrogen atom on one electron species. बार बार वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बता रहा हूं आपको. वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मींस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एटम तो एक ही होता है हाइड्रोजन, बट हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दो तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया हीलियम प्लस. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 निकाल दो तो लिथियम 2 + 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया. बेरिलियम में कितने होते हैं? 4. तो बेरिलियम में कितने निकालने पड़ेंगे? 3. तो बेरिलियम 3+.
ठीक है ना। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की लिस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम 1+, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, boron 4+ and so on. These are 1 electron species. So Bohr's model actually 1 electron species के लिए ही था, वो उसको एक्सटेंड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस थी उसकी, है ना। बट उसने फिर भी एक, क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि ऐसा आइटम होगा कोई, ठीक है ना। ओके, तो Bohr's theory has helped in calculating energy of an electron in hydrogen atom or 1 electron species. तो उसने जो रिलेशन दिया था उसकी डेरिवेशन हम अलग से करेंगे क्योंकि वो अपने थियोरी का पार्ट नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से क्लास रखेंगे, उसमें मैं करवाऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। सो -2π² me4 k² z² over n² x² -2π² me4 k2 z² over n² x²। ये रिलेशन उसने डिराइव किया है बोर्स मॉडल से, ये रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें m क्या है, m इज mass of electron and that is value is 9.11 into 10 raised power -31 kg, ठीक है। E is charge on electron and you know charge on electron, magnitude of charge, वैसे तो 1.602 into 10 raised power -19 कूलम, ठीक है। और K जो है इट इज कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। K रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, K is constant and represent absolute permittivity of the medium, and it is in this case it is in vacuum, ठीक है। in this case vacuum in this case, यहां पे तो वैक्यूम लेंगे और दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है, इट्स वैल्यू इज 9 into 10 raised per 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, ठीक है, K की। देन Z is atomic number of the species, जिस स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उस स्पीशीज का एटॉमिक नंबर। देन N is शेल नंबर, मतलब ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट शेल की बात हो रही है, सेकंड शेल की बात हो रही है, थर्ड शेल की बात हो रही है, दैट इज द शेल नंबर 1 2 3, ओके। H is that you know Planck's constant, its value is 6.6 into 10 raised power -34 joule second. So if pi you know 22/7, है ना। तो if we put the values of all these numbers, so what is left, Z and N, so value comes out to be energy value comes out to be -2.18 into 10 raised to power -18 into Z square over N square joule, ये वैल्यू आती है। एंड दिस जूल वैल्यू इज पर एटम, वन एटम के लिए, ठीक है ना। और यही वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो इट्स वैल्यू इज
13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, मैं यहां लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैसे आता है? एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज इज दिस इन कूलम्स, कूलम इनटू वोल्ट, और कूलम इनटू वोल्ट इज जूल। ठीक है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये होती है। अगर हम पुट कर दें तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो इन पर एटम, और यही वैल्यू अगर किलो जूल में ले जाएं तो 1312 हो जाता है इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, और किलो जूल पर मोल कैसे आता है? अगर मैं इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और जूल को किलो जूल कर दूं और इससे मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रो नंबर से, तब ये आएगा पर मोल। और अगर मैं किलो कैलोरीज में लेता हूं इसको, तो ये आएगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये एनर्जी की वैल्यूज है इन डिफरेंट यूनिट्स। इन यूनिट्स के अलावा किसी में आपको पूछेगा नहीं, मैंने सारे यूनिट्स में लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट इज जूल पर एटम, मोस्ट कॉमन। दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, this is in kilojoule per mole, this is in kilocalories per mole. These are the energy values. So ये energy value भी बोर्स मॉडल से फाइंड आउट की गई। ठीक है ना, तो that is also an achievement of बोर्स मॉडल। ये यूनिट भी, ये वैल्यूज भी आपको याद करनी है। अगर आप बोर्ड की बात, अपने स्कूल के एग्जाम की बात करो तो ये मेन है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो ये और ये भी इंपॉर्टेंट है along with this। ठीक है, समटाइम इट इज आल्सो आस्क्ड, तो इसलिए मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, 1 कैलोरी जो है दैट इज, देखो कैलोरी बड़ा यूनिट होगा ना जूल से, इट इज 4.2। ठीक है, जूल 1 कैलोरी इज इक्वल टू, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.184 जूल। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइट 4.2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट। फोर्थ है बोर्स थ्योरी has explained atomic spectrum of hydrogen atom. It explained the hydrogen spectrum of atomic spectrum of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के जो भी स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो बोर्स थ्योरी ने एक्सप्लेन किए। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज सीरीज ऑफ लाइंस। लाइंस मींस एमिशन लाइंस, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फॉल करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अभी किया हमने कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे फॉल करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक वेव नंबर होगा। ठीक है ना, तो वो जो अलग अलग लाइंस आएंगी उसको हम अलग अलग तरीके से, हाइड्रोजन का पूरा एक चार्ट बनता है। ठीक है, उसको इसने एक्सप्लेन किया कैसे होता है। देखो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है,
कि ये दिख रहा है, यस, ये अगर n1 है, ठीक है, ये n इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n equal to 5, n equal to 6। बोर्स मॉडल में है ना कि दो एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज n increases, बट एनर्जी डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये शेल्स अलग अलग। लेट अस टेक एग्जांपल, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां पे। अब व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद इट कैन जंप टू एनी लेवल। लास्ट लेवल कौन सा, इन्फिनिटी। कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। एनर्जी डिफरेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, टच नहीं करेगा ना, ये n7 ऐसे चलता रहेगा ना, ठीक है। तो बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन, अब आप एक एटम को पकड़ के तो हीट नहीं करोगे, वी हैव सैंपल, पूरा सैंपल होगा ना हाइड्रोजन एटम्स का, पूरा ऐसे बॉक्स में होंगे हाइड्रोजन एटम्स, है ना, मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि उसका तो मास भी बिल्कुल कम होता है, ठीक। तो जब वो हाइड्रोजन एटम को हम हीट करेंगे, उस बॉक्स को पूरे सिलेंडर को हीट किया हमने, तो अलग अलग एटम अलग अलग एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल पे जाएगा, अलग अलग एटम्स पे। लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन इज एट लेवल 7, तो जो 7 लेवल पे होगा उसके लिए प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी कि एक तो है कि 7 से सीधा 1 में आ जाए, या क्या हो सकता है कि 7 से 2 में आए, या 7 से 3 में आए, या 7 से 4 में आए, या 7 से 5 में आए, या 7 से 6 में आए। वी कांट से कि वेयर इट कम्स, बट ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से अगर फर्स्ट लेवल पे आता है, किसी भी लेवल से, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, इट इज आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर, और इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर लेवल कम्स टू फर्स्ट लेवल, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। और कोई भी हायर लेवल से अगर किसी भी हायर लेवल से आता है और सेकंड तक आता है, किसी भी हायर लेवल से सेकंड लेवल तक आता है, तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। These names are after their discoverer, ठीक है। और किसी भी हायर लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन आता है थर्ड तक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पास्ट्रिम सीरीज। और किसी भी हायर लेवल से अगर 4 तक आता है,
that is called bracket series. If from any higher level it comes up to fifth level, then that is called P fund series. बाकी वैसे ही अगला होगा हम्फ्री सीरीज होता है, लुइस सीरीज होता है, देयर आर सो मेनी सीरीज. उसके आगे अगर 6 तक आता है तो उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज. ठीक है. अब ये जो सारी सीरीज है, देखो अलग अलग एनर्जी होगी. इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा फर्स्ट तक तो एनर्जी इज डिफरेंट, हियर एनर्जी इज डिफरेंट, एवरी टाइम एनर्जीज आर डिफरेंट. सो हर एक के एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं हम. इसके लिए N1 क्या होगा 1. लाइमन सीरीज के लिए N1 इज इक्वल टू 1. फॉर बाल्मर सीरीज N1 इक्वल टू 2. For Paschen series N1 equal to 3. For bracket series N1 equal to 4. For P fund series N1 equal to 5. For Humphrey series N1 equal to 6. तो ये अपने पास जो है ये सीरीज है, and these series are called hydrogen spectrum, atomic spectrum of हाइड्रोजन की सीरीज है. ठीक है, इनको एक बार टेबल में लिख लेते हैं. अब बताओ हर सीरीज के लिए जो N2 होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, उसके अगले नंबर से. चलो अब आपकी टर्न है. आई एम राइटिंग. ठीक है, यू विल रिप्लाई वन बाय वन. ठीक है, मैं लिखता हूं यहां सीरीज, यहां पे उसका N1, यहां पे उसका N2 और उसका रीजन. रीजन आई विल टेल यू. फर्स्ट इज लाइमन सीरीज. या सीरियल नंबर कर देता हूं. दिख रहा है ना? हाँ, वेरी गुड, सही. 2 इज बाल्मर सीरीज. 3 इज पास्टन सीरीज. 4th is bracket series. 5th is P fund series. These are main series in our syllabus. ठीक है, ओके. तो one by one just reply. बोलो लाइमन सीरीज के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? इट इज 1. फॉर लाइमन सीरीज N1 is 1 and N2 is 2, 3, 4 so on up to infinity. Got it? N1 is 1, N2 starts from 2. So first line of Lyman series N2 is 2. For second line N2 is 3. For third line N2 is 4. And last line मतलब limiting line of the series. क्या बोलते हैं उसको? Limiting line of the series. For limiting line of series N2 is infinity. Last line को क्या बोलते हैं? क्योंकि वो लिमिट आ गई ना उसकी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन ऑफ द सीरीज. एंड यू नो सबसे ज्यादा एनर्जी लाइमन सीरीज की होगी क्योंकि उसमें गैप सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये होता है
अल्ट्रावायलेट रीजन। कौन सा रीजन होता है? यूवी। नाउ फॉर बाल्मर सीरीज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 फॉर बाल्मर सीरीज? रिस्पॉन्ड फास्ट। बाल्मर सीरीज के लिए N1 क्या होगा? 2 and N2, so N2 is, it may be 3, 4, 5, so on up to infinity. Very good. So it is in visible region. This is most important. That's why उसने लिखा बाल्मर फॉर्मूला, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि विजिबल रीजन में विविधता दिखेगा ना, लाइट कलर्स दिखेंगे, इसलिए सबसे पहले बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई, बाकी सीरीज बाद में डिस्कवर हुई। ठीक है, ओके। फॉर पास्टन सीरीज अब मैं अपने आप लिखता हूं, इट इज 3, फॉर ब्रैकेट सीरीज इट इज 4, रीफंड सीरीज 5, हम्फ्री सीरीज आगे आएगी तो क्या हो जाएगा? 6। ओके, सो इट इज 4, 5, 6 so on up to infinity. Alright, this 5, 6, 7 up to infinity, 6, 7, 8 so on up to infinity, and they are all in infrared. They are all in infrared region, far infrared. Okay, but right infrared. तो ये UV रीजन में होते हैं, ये विजिबल में, और ये तीनों IR में। इसलिए सबसे वर्ल्ड बाल्मर सीरीज है और सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर क्वेश्चन आए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्लास में आए, कि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतनी सीरीज कैसे बन गई? तो समझ गए क्यों? क्योंकि हम एक एटम को पकड़ के हीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितने एटम्स हैं? मिलियंस ऑफ एटम्स, उनको इकट्ठा हीट कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल पे जाएंगे वो, और अलग अलग लेवल पे जाने के बाद भी वो किस लेवल से कहाँ आएगा वो खुद डिसाइड करेंगे। 7 से डायरेक्ट 1 में आएगा, कि 7 से पहले 6 में आएगा, 6 से डायरेक्ट 1 पे आ जाएगा, या 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना। तो उस हिसाब से ये लाइंस बनती हैं सारी। ठीक है ना, तो दिस थियरी इज आल्सो एक्सप्लेन्ड विद सेटिस्फैक्टरी बाय बोर। ठीक है, ओके। तो कितनी लाइंस होंगी? चलो आप बताओ मुझे कि कोई भी एटम है 4th सीरीज में, ठीक है, 4th लेवल पे है, तो ये 3rd है, 2nd है, 1st। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है दैट इज ग्राउंड स्टेट, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो किसमें होगा? न्यूक्लियस के पास होगा ना। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, 3rd लेवल है, 4th लेवल है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट लेवल में होगा ना, स्टार्टिंग में हीट करने के बाद जाएगा कहीं भी। तो मान लिया अभी इलेक्ट्रॉन 4th लेवल पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4th लेवल पे, उसको फर्स्ट लेवल पे आना है, तो बताओ कितनी लाइंस होगी? उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी लाइंस आएंगी। चलो आप कैलकुलेट करो, राइट। हाँ बहुत बढ़िया बेटा जी। अब आपको अगला क्वेश्चन मैंने दिया है कि आपके 4, 3, 2, 1 4th लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, जंप करके हीट करने के बाद वो 4th लेवल पे चला गया है। तो 4th लेवल पे चला गया है तो उसको फर्स्ट लेवल पे आना है। फर्स्ट लेवल पे आने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये बताना है आपको, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, मतलब मैक्सिमम नंबर है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल
लाइंस। हो गया कि फोर्स से डायरेक्ट वो फर्स्ट पे आ जाए, फोर्स से यहां लिखता जाता हूं, है ना, फर्स्ट इज फोर्थ टू डायरेक्ट फर्स्ट, तो दिस इज फर्स्ट लाइन। एक ऐसा हो सकता है कि फोर्थ से पहले वो फोर्थ से 2 पे आए, ठीक है, और फिर 2 से 1 में आ जाए, फोर्थ से 2 पे आई और 2 से 1, तो 1 2 3 लाइन हो गई, 3 तो यही होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले 4 से 3 में आए और 3 से डायरेक्ट 1 में, 4 से 3 से डायरेक्ट 1, या फिर पहले 4 से 3 में, फिर 3 से 2 में और फिर 2 से 1 में, तो 3 से 2 भी लगाई, ठीक है, तो कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स आएंगी। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर देखो, 4 से 3, है ना, और 4 से 2, 4 से 1, 4 के लिए 3 ऑप्शन है, 3 के लिए क्या ऑप्शन है, 3 से 2, 3 से 1, और 2 के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो टोटल 6, है ना। बट ऐसा तो कितनी बार करते रहेंगे, इसके लिए उन्होंने पूरा फॉर्मूला बना दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इनको और क्या बोलते हैं, एमिशन लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electron fall from fourth level to ground state, and that is equal to n into n minus 1 by 2, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पे 4, तो 4 minus 1 over 2 means 4 into 3 by 2, it is 6, ठीक है। ये मैंने बता भी दिया आपको कैसे आती है लाइन्स, और ये फॉर्मूला है, ठीक है, करोगे। तो बताओ अगर मुझे निकालना है 6th लेवल से, तो बताओ कितनी लाइन आएंगी, 6th लेवल टू ग्राउंड स्टेट, बोलो 6th लेवल टू ग्राउंड स्टेट, यस, 6 into 5 over 2, it comes out to be 15, वेरी गुड, ओके। चलो ये सक्सेस स्टोरी थी बोर मॉडल की, लिमिटेशन हम बाद में करेंगे। एक और छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको, कि ये जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोला, ग्राउंड स्टेट। तो ये जो हायर लेवल है उनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। वैसे आई एम हाईली एक्साइटेड, हाईली एक्साइटेड मीन्स आई एम हाईली एनर्जेटिक, मतलब ग्राउंड स्टेट पे लोएस्ट एनर्जी होगी, ये सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो इसको जो है बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एन क्या होगा, 2। यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कि लिखा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n2 ले रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा n2 3, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, this one is third excited state। मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n+1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स 4, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स
n इक्वल टू 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2, फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4. कीप इन माइंड, तो सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 7. अगर मैं बोलूं कि वी हैव सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, तो n होगा 7. ठीक है, तो इट इज, these are the, we can say, successes of Bohr's model. ठीक है, achievements of the Bohr's model. उसने ये अचीव किया, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ठीक है, ये सब चीजें, और एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ठीक है, ये सब एडवांटेजेस और अचीवमेंट्स हैं बोर्स मॉडल की. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर टुडे. वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from the energy level with n equal to 4 to energy level n equal to 2. So you know, to calculate wave number, you know wave number is RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square. But here, because hydrogen atom is there, so z is equal to 1. n1 means lower shell number, so n1 equal to 2, n2 equal to 4, and RH is given to us, that is in per centimeter. लास्ट मैंने 109677 लिखवाया था आपको, इट इज 109677 और 109678 पर सेंटीमीटर. ओके, ये वैल्यूज आपके पास है. ठीक है, Z भी है, N1 भी है, N2 भी है, RH भी है. So we can calculate wave number, and wave number and wavelength are inversely proportional. Wave number is equal to 1 upon lambda, and this is called Balmer formula. This is Balmer formula. याद रखना है, wavelength का inverse reciprocal, that is called wave number, and its value is given by this Balmer formula. यहाँ पे RH है, Rydberg constant, value is given, N1 is lower shell number, N2 is higher shell number, और Z is atomic number of the species. तो यहाँ तो हाइड्रोजन एटम ही था, तो there is no need to write Z, but let's write it at, because it is for general species. ठीक है, okay, तो just put the values. So 1 upon lambda is equal to 109,678 into 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square into 1. ठीक है, तो यहां से 109,678 ऐसे आ जाएगा into 1 upon 4 minus 1 upon 16. ठीक है, तो 16 क्या आ गया एलसीएम यहां पे 109 16 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 minus 1, तो नीचे लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल. तो यहां से क्वेश्चन पढ़ लो पहले. क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड. ठीक है ना, क्योंकि N2 है तो कौन सी सीरीज होगी,
n इक्वल टू 2 है, n1 इज इक्वल टू 2, तो कौन सी सीरीज हुई है? और लिखा है व्हाट इज द कलर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ। ये तो ऐसे नहीं पता चलेगा हमें कलर, बट हमें ये पता चल जाएगा कि दिस इज इन विजिबल रीजन। इसमें होगा ये, इट इज ऑब्वियसली इट इज कलर्ड, ठीक है, विजिबल रीजन में होगा। क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो क्योंकि n1 2 है, तो कौन सा रीजन होगा? विजिबल, ठीक है। बट चलो वेवलेंथ तो फाइंड आउट करें। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109,678 इंटू 3 by 16. That means lambda is equal to 16 divided by 109,678 into 3. तो बोलो कितना वेवलेंथ आया है? तो 16 ओवर ये आ गया पूरा, और किसमें आंसर आ जाएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसमें है? पर सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर आया 1 अपॉन लैम्डा, दिस इज इन पर सेंटीमीटर। सो लैम्डा इज इन सेंटीमीटर। तो फिर 16, इसको मैं अगर 1.09678 कर दूं इंटू 3, तो इंटू क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, 10 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। तो इसके बेस पे ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो, इंटू 10 रेज पर -5, और इसको 1.1 ही कर दे अगर, तो 3.3 के राउंड आ जाएगा। ये 1.09 है ना, तो टेक इट एज 1.1। इसको अगर राउंड ऑफ कर दे तो 1.1 के राउंड हो जाएगा ना, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, सो बेटर टू राइट इट लाइक दिस। लैम्डा कम्स टू बी 4 पॉइंट कितना गया? 848 है ना, तो 4.85 इंटू 10 रेज पर -5 सेंटीमीटर, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 485 इंटू 10 रेज पर -7 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से ये जो वैल्यू है, आपको पता है 1 नैनोमीटर जो होता है, दैट इज 10 रेज पर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर, कीप इन माइंड इट इज 10 रेज पर -9 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 रेज पर -9 इंटू 10 रेज पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। So that is 10 raised to power -7 centimeter, right? So lambda is 485, ये क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। और इट इज इन विजिबल रीजन, इसमें आएगा विजिबल रीजन, ठीक है। मतलब जो आंसर दिया हुआ है 486 नैनोमीटर, बट हमने वहां अप्रोक्सीमेट किया ना थोड़ा सा, तो इसलिए 485 के राउंड इट्स ओके, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो 485 नैनोमीटर, और अगर आपको एग्जैक्ट करोगे तो ये आएगा 486 नैनोमीटर, ठीक है। सो बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहां पे आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया ना, 1.1 किया, ठीक है। इतना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो आप, क्लियर? ओके। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? सिर्फ फॉर्मूला ही यूज किया हमने, बाकी कुछ नहीं किया। हाँ, 4.8 इंटू 10 रेज पर -5 है ना, तो 4.8 अनिका आगे भी होगा, 4.848 था, है ना, 4.848 आया था, तो
तो उसको राउंड ऑफ करें तो 4.85 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको 485 इंटू 10⁻⁻7 लिख दिया। The question is the energy associated with the first orbit in hydrogen atom is minus 2.17 into 10⁻⁻18 joule per atom. It is given to you, ठीक है। So keep it like this only. मैंने आपको लिखवाई थी 2.18 into 10⁻⁻18. That's true, right? But if value is given like this, you keep it like this only, ठीक है। Don't give your advice कि नहीं it should be minus 2.18 into 10⁻⁻18 joule per atom. Okay, keep it like this because it is already given to you in the question. Okay, what is the energy? What is the energy associated with the fifth orbit? एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही, कैलकुलेट द ओके रेडियस के लिए हमने नहीं किया था शायद, वो बाद में करते हैं, है ना। पहले ये कर लो, चलो इसका आंसर बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड, पहले ये बताओ। उसने एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू यू। सो पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। अगर आपको याद होगा तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RH इंटू Z² ओवर n²। लिखवाया था ये, देखो। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ठीक है। देखो ये वैल्यू, इसको भी जूल पर एटम में आपको एनर्जी दी है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस RH इंटू Z कितना है 1 और n कितना है 1, ये हुआ, समझिए बात। तो यहां से एनर्जी जो है फर्स्ट ऑर्बिट की that is equal to minus RH and its value is given minus 2.17 into 10⁻⁻18 joule per atom. Got it? तो ये RH की वैल्यू तो अपने पास आ गई 2.17 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ठीक है ना। अब एनर्जी किसकी निकालनी है, फिफ्थ ऑर्बिट की। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस अगेन RH इंटू Z², Z तो 1 ही है, और नीचे कितना होगा 5², क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बोला है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस 2.17 into 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 25। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस 217 into 10⁻20
डिवाइडेड बाई 25, है ना। तो कितना आया वैल्यू, E5 इज इक्वल टू, हाँ, सो इट इज 8.68 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम। तो ये वैल्यू आएगी हमारा आंसर। अगर इसको मुझे और तरीके से करना होता तो देख लो, अभी मैंने ऐसे किया पूरा, है ना। तो आप इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते थे कि ये मुझे बताना था आपको कि RH इक्वल टू दिस होता है ना। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम का नंबर हो, है ना, अभी आपने पढ़ा एनर्जी इक्वल टू माइनस RH इंटू Z² ओवर n² किया ना ऐसा। तो अगर मेरे पास, ओ सॉरी बेटा, नेगेटिव है, नेगेटिव, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, हाँ नेगेटिव चल रहा था। इट शुड बी माइनस 8.68 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम। थैंक यू वेरी मच रालोम एंड साक्षी। और ओके, तो ये सुन लो, ऐसे कर सकते थे, है ना, कि E1 और E5 दो थे ना। तो अगर मेरे पास EN1 या EN2 ओवर EN1 हो, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि सेम है ना, हाइड्रोजन एटम ही है, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, N1 ओवर N2 स्क्वायर, बस, दिस इज दैट्स इट। En2 ओवर En1, या फिर सिंपली E2 बाई E1 इक्वल टू N1 बाई N2 होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, Z तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। या इसको कैसे लिख सकते हैं, तो E2 क्या हो जाता, E1 इंटू N1 बाई N2 होल स्क्वायर। तो E1 तो पता ही था -2.17 इंटू 10⁻⁻18, और ये 1 था और ये 5 होल स्क्वायर। तो सिंपली आ जाता ना -2.17 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/25, जो आपका आंसर आया -8.68 इंटू 10⁻⁻20। ऐसे भी कर सकते थे इसको, है ना। वो मैंने पूरा इसलिए किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये रिलेशन आया, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशन कैसे आएगा कि RH तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो N2 N1 आ जाएगा ना सीधा, और E1 दिया हुआ था आपको, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई थी ना, तो फिफ्थ की एनर्जी 25 से डिवाइड हो जाती है। समझिए बात को, ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि एनर्जी और n में क्या रिलेशन है, इनवर्स, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², ये रिलेशन है, सिंपल, राइट, खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। कैलकुलेट द wave number for the longest wavelength transition, for the longest wavelength transition in the Balmer series, in the Balmer series of atomic
number for the longest wavelength transition. अब longest wavelength, और longest wavelength का मतलब एनर्जी क्या हुई? देखो बाल्मर सीरीज में N1 कितना होता है? तो इट इज N1 इक्वल टू 2. N1 की वैल्यू कितनी है? 2. अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखो, एक होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ठीक है ना, और दूसरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है, देखो एनर्जी क्या होती है? एच न्यू. एच न्यू मीन्स एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है. और इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्स. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन. सो लोएस्ट एनर्जी जो है ट्रांजिशन की किसमें होगी? जब शेल्स नियरेस्ट होंगे. एनर्जी सबसे कम किस ट्रांजिशन में लगेगी? N1 से 2 से 3. 2 से 3 मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी? व्हेन ट्रांजिशन इज फ्रॉम N2 टू N1 प्लस 1, याद रखना ये. और शॉर्टेस्ट कब होगी? जब N1 टू इंफिनिटी. ये नोट कर लो आप. शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इज व्हेन the transition is between N1 and N1 plus 1. N1 and N1 plus 1. और shortest wavelength transition कहाँ होगा? When transition is between N1 and infinity. क्योंकि limiting line जो है shortest wavelength transition, या फिर क्या बोलेंगे? Limiting line. इसको क्या बोलेंगे? Limiting line. और इसको कौन सी बोलेंगे? फर्स्ट लाइन. देखो नाम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, या फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, है ना. कौन सी लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन, है ना. इसको भी लिख देता हूं, लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है. तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होगी N1 एंड N1 प्लस 1 के बीच में. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन या हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन. हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, या फिर लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन. तो ये जो है ट्रांजिशन, ये किसमें होगी? N1 एंड इंफिनिटी के बीच में. जो है हमें वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, है ना. और बाल्मर सीरीज के लिए तो पहली तो बात कि वेव नंबर इज 1 upon lambda इक्वल टू RH 1 upon N1 स्क्वायर माइनस 1 upon N2 स्क्वायर, ठीक है. और इनटू क्या होता है? Z स्क्वायर. बट Z तो नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1. Value of RH 1.0967. अब 677 लेना है कि 678 लेना है, इट इज अप टू यू, है ना. तो 0.9677 तो क्योंकि यहां पे कुछ लिखा नहीं है इसने, है ना, तो हम इसको 1.097 भी ले सकते हैं. राउंड ऑफ कर दिया ना मैंने, है ना, इंटू 10⁷ पर मीटर, ठीक है. अब फॉर लॉन्गेस्ट फॉर बाल्मर सीरीज, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, फॉर बाल्मर सीरीज N1 इक्वल टू 2, ये भी हो गया. नाउ फॉर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन
N2 इक्वल टू 3, 2 प्लस 1, समझ गए? सारी वैल्यू आ गई आपके पास, जस्ट पुट द वैल्यू। सो वेव नंबर इक्वल टू, बोलो 1.09, और नहीं तो ऐसा करो 1.09677 पूरा लिख लो, 1.09677 इंटू 10 रेज पर 7, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर पर मीटर। तो यहां से 1.09677 इंटू 10 रेज पर 7, और ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। जस्ट सॉल्व इट। 9 और 4, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 36, और ये 9 माइनस 4 दिख रहा है ना? ठीक है, इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 रेज पर 7 इंटू 5/36 इज 1.523 इंटू 10 रेज पर 6 पर मीटर। तो ये अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit. And what is the wavelength of light emitted when the electron returns to the ground state the ground state electronic energy is minus 2.18 into 10 raised by minus 11 Earths. अर्ज में वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि 1 जूल आपको पता ही है, 1 जूल इक्वल टू 10 रेज पर 7 अर्ज, ये होता है ना रिलेशन जूल और अर्ज में। अब देखो आपको ये वैल्यू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दी हुई है अर्ज में, उसने बोला है कि कितनी एनर्जी चाहिए
जूल्स में टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ एंड टू है 5 है ना, और n1 है 1। तो n1 और n2 तो क्लियर हो गए, ठीक है। अब आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है n1 और n2 के बीच में, ठीक है। एनर्जी कितनी होगी, बोलो। ये रिलेशन दिखवाया है मैंने, ठीक है। आपको जूल्स में रिलेशन दिखाया है, अभी अर्ग्स में दिया है, तो अर्ग्स में निकाल दो। फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, ठीक है। यहां पे RH आपको दे रखा है, RH मीन्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक्चुअली, है ना। तो RH की वैल्यू है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अर्ग्स। यहां पे ये वैल्यू दी हुई है ना। और n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ओके, हाउ टू गैस। ओके, गैस कैसे लगाना बेटा, देखो एनर्जी के लिए रिलेशन है। अगर मुझे मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं भी पता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, बट मुझे ये तो पता है ना कि दोनों इनके बीच में कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, वो निकालना है। तो इसकी एनर्जी होगी E1, इसकी एनर्जी क्या होगी E2, सॉरी हाँ चलो इसको E1 ले लेते हैं और इसको E2 की जगह मैं E5 लिखता हूं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि 5th लेवल का है और ये 1st लेवल का। तो मतलब ये तो पता ना कि डेल्टा E इक्वल टू E5 माइनस E1, ठीक है। यहां से जो निकालना था ले लिया। एनर्जी इन जूल्स पूछा है ना, तो RH अर्ग्स में रखने का मतलब ही नहीं है। आप इसको -18 लिखा है मैंने पहले ही, तो ये जूल्स में लिखो एनर्जी, क्योंकि उसने जूल्स में पूछी है और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है अर्ग्स में। नो नीड टू राइट इट एज, जस्ट राइट दिस, है ना। हाँ, तो अब क्या पूछा था, एनर्जी इन जूल्स किसके लिए, रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू 5th बोर ऑर्बिट। इतना तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो होगी E5 माइनस E1, ठीक है ना। तो इसका मतलब एनर्जी से रिलेटेड रिलेशन है। तो एनर्जी जो होती है ना, nth ऑर्बिट में वो होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। अब अपने पास E1 ले लो, सो E1 तो सिंपली हो जाएगा, Z भी 1 है N भी 1 है, तो E1 तो हो गया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। बाद में याद रखना वेवलेंथ भी निकालनी है ना। चलो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो E5 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/25। तो डेल्टा E जो है यहां से E5 यह है -2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2.18 इंटू 10⁻18 तो कॉमन है,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ 1.25, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी। डेल्टा ई 2.18 into 10 raised power minus 18 into 25 minus 1 एलसीएम ले लिया ना 25, इतने जूल्स मतलब 2.18 into 24 over 25 into 10 raised power minus 18 जूल, तो ये आएगा 2 पॉइंट कितना निकाला आपने 09, हाँ तो keep it 2.09 into 10 raised power minus 18 जूल, तो ये अपना एनर्जी का रिलेशन आ गया। फिफ्थ से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, क्या बोला उसने कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फिफ्थ स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन। तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब from n1 equal to 1 to n1 n2 equal to 5 is equal to energy released when it returned back to ground state। ग्राउंड स्टेट में आने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज्ड है वो आ गई अपने पास, एंड दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डेल्टा इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो यहां से आप लैम्डा निकाल लोगे, दैट इज अब ये लैम्डा जो है डेल्टा ई से कैसे रिलेटेड है, इट इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा ई कितनी वैल्यू थी 2.09 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, आंसर मीटर में आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना, इट शुड बी 9.50 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 मीटर, ठीक है ना, और इट कैन बी रिटन एज 950 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, और दैट मीन्स इट इज 950 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जो 1 एंगस्ट्रॉम है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 10 मीटर, राइट। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा 950 एंगस्ट्रॉम। देखो 950 है ना, 954 आता है, 948 आता है, इट इज एक्सेप्टेबल वैल्यूज, दे आर एक्सेप्टेबल वैल्यूज, ठीक है, डन। ये तो समझ गए ना, जितनी एनर्जी उसको ऊपर जाने में लगेगी उतनी एनर्जी जब वो वापस आएगा तो रिलीज होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालनी थी। तो ये स्टेप 2 हुआ, ये वाला, ये जो किया, दिस इज स्टेप नंबर 2, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। और पहले जो किया था वो क्या था, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। आज हम बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स जो किए थे उनका मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है बोर्स पोस्टुलेट की वो करेंगे, तो मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ बोर्स पोस्टुलेट्स। सो यू नो बोर ने क्या बोला था कि
electrons are revolving around the nucleus in circular paths, and those circular paths have fixed energy and fixed radius. ठीक है, ये था ये मान लिया, और किसके लिए था वो? हाइड्रोजन एटम, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन एटम। तो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल मींस लीनियर वेलोसिटी v है, v इज लीनियर वेलोसिटी, ओके। और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो ले लिया मैंने प्लस ZE, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है कितना होता है? -E, इस पे प्लस ZE और इलेक्ट्रॉन पे -E, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने ले ली R। ये था पूरा मॉडल कि यहां एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से और इस ऑर्बिट से तक जो डिस्टेंस है वो है R, है ना, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, राइट। तो जो फर्स्ट जो पॉस्टुलेट्स तो बहुत सारे, पर मैथमेटिकल जो फॉर्म्स थी उसमें एक फॉर्म थी mvr इक्वल टू nh/2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि आज हमें डिराइव करना है रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए डेरिवेशंस, ठीक है, कैसे वो डेरिवेशन आती है। दे आर यूजफुल फॉर नीट एग्जाम, IIT JEE मेन एडवांस एग्जाम, मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वैसे भी पता होना चाहिए कि वो वैल्यू आई कहां से। एनसीईआरटी ने क्या है, सीधी वैल्यूज दे दी है ना, पर वो कहां से आई है वो आज हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो पहला जो इसका बात था कि जब तक एज लॉन्ग एज इट इज रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, ना एनर्जी लॉस होगी ना ही एनर्जी गेन होगी। ऐसा कब होगा कि जितना ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही उसके अपोजिट साइड फोर्स लग रही है। जैसे हम हाथ से, मैंने बताया था उस दिन पे, किसी रस्सी पे स्टोन बांध के, है ना, रोप पे स्टोन बांध के उसको घुमाएं तो जितना फोर्स अपने हाथ लगा रहा है उतना ही फोर्स वो पत्थर भी लगा रहा है बाहर की तरफ, है ना, तभी तो वो वहां रह पा रहा है ना। अगर आप यहां से छोड़ दोगे तो इट गोज स्ट्रेट, और अगर वो फोर्स इतने हम खींच रहे हैं उसको तो वो हमारी तरफ आ जाना चाहिए, बट क्या है, बैलेंस हो रहा है। आपके हाथ की फोर्स और जो स्टोन जो है बाहर को फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सो किसके अकॉर्डिंग आएगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ जो है वो, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं उसको, तो अगर दो चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है तो फोर्स जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? मैग्नीट्यूड Ze, और इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? E, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R, तो R स्क्वायर मींस
ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Z E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ठीक है, और F इज इक्वल टू K इंटू Z स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीच में ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये एक्चुअल में क्या होता है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां तक ये कूलम लॉ समझ में आया आपको। कूलम लॉ अगर मैं उसको लिखूं, है ना, कि दो पार्टिकल हैं जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 है और जिनके बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो वो लिखा ना, Q1 क्या है, ZE। Z क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए लिथियम या हीलियम 1+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, प्रोटॉन भी 2, पर हीलियम प्लस में सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस पे 2 E आ जाएगा ना, एक पे E चार्ज होता है, और E क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उस हिसाब से ये सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, है ना, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रदरफोर्ड था यही फेल हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन उसके पास घूमेगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। पर वो ये नहीं बता पाया कि जब वो मूव कर रहा होगा तो बाहर को भी उसकी फोर्स लगेगी, उसको हम दूसरी जो फोर्स लगेगी उसको बैलेंस करने के लिए दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी mv² ओवर r, mv² ओवर r। m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v वही लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है ना। तो बोलता है कि जितनी फोर्स आउटवर्ड लगेगी उतनी फोर्स इनवर्ड लगेगी, इस वजह से दोनों बैलेंस कर जाएंगी, दोनों फोर्सेस। वो इसके बारे में नहीं बोल पाया था रदरफोर्ड कि ऐसा होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया जब उन्होंने पॉज किया ना कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है। एटम स्टेबल बोल रहे हो आप, पर एटम तो स्टेबल हो ही नहीं सकता कि न्यूक्लियस उसको खींचेगा अपनी तरफ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है मैक्सवेल की, वो तो यही बोलती है कि जब भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट बोर ने ये बता दिया कि एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है ना, फिक्टिशियस फोर्स है कि उसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब दीज आर बैलेंस्ड, दैट्स व्हाई इट कंटिन्यूज टू मूव इन दिस ऑर्बिट, और मूव तो करता रहेगा पर उसकी एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से बिकॉज दीज टू अट्रैक्शंस बैलेंस ईच अदर। क्योंकि चेंज कब आता है एनर्जी में, जब या तो अट्रैक्शन बढ़े या रिपल्शन बढ़े। अगर अट्रैक्शन बढ़ता है
तो एनर्जी रिलीज होती है, और रिपल्शन बढ़ता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो यहां पे बोलता है कि जितना अट्रैक्शन है उतना ही उसकी बैलेंसिंग फोर्स है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो है दे बैलेंस ईच अदर। और स्टेबल ऑर्बिट of an electron, for the stable orbit of an electron, both the forces are balanced. दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस, है ना। तो दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दो, मतलब कि mv²/r is equal to kz a² over r², राइट। तो एक r से एक r कैंसिल, ठीक है। तो यहां से v² जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, k z m e² बाई r, राइट। m मैं इधर ले गए, सॉरी m नीचे आएगा ना, v² इक्वल टू k z e² ओवर m r। ये रिलेशन आ गया कि लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू k z e² ओवर m r। नाउ आपने बोर पोस्टुलेट पढ़ा है, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट, कौन सा पोस्टुलेट, के ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi। मतलब mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 pi। सुना ये एंगुलर मोमेंटम m इंटू v क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इंटू r, तो mvr इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 pi। तो यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई mr, ठीक है। दैट इंप्लाइज कि v² जो है, ये v² उस v² से इक्वेट कर देंगे हम, तो v² इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई² m² और r², ठीक है। तो अब इस v² की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, वो जो लिखी थी ना, नंबरिंग कर दो, वो जो कूलम्स लॉ का ये वाला फोर्स था उसको 1 कर दो, इसको 2 और इसको ले लो 3 और इसको ले लो 4, ये 4 इक्वेशन हो गई। नाउ इक्वेट 3 4, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ v² इन दिस केस। तो ये पुट करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, देखो n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई² m² r² इक्वल टू k z e² ओवर m r, ठीक है। तो यहां से एक r तो कैंसिल हो गया, एक m भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आई बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। r को मैं इधर ले जाऊं तो r इज इक्वल टू, देखो n² h²
डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, या एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये कौन सी रेडियस हुई? nth ऑर्बिट की। तो इसको मैं आर एन लिख देता हूं। पहले मैंने आर आर लिखा है ना, मतलब जिसे आर रखो, बट दिस आर इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आर इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो इसको मैं इसलिए आर एन लिख रहा हूं टू डिस्टिंग्विश कि r1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, r2 रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ऐसे करके इसको मैंने rn कर दिया। गॉट इट? तो दिस r इज इक्वल टू, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दिस r इज इक्वल टू rn। ठीक है, अब इसमें h की वैल्यू वी नो इट इज 6.626 into 10 raised power minus 34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू एवरीवन नोस 3.14। m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। फिर z तो एटॉमिक नंबर है, वो तो वैसे ही रहेगा, है ना। k की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी हमने, 9 into 10 raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E की वैल्यू इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम। तो ये सारी वैल्यू जो है, देखो ये आया h स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी 4 पाई स्क्वायर m k a स्क्वायर, सबकी वैल्यू पता है, क्या बचा? n स्क्वायर एंड z। ठीक है, तो याद रखना, ये याद ही करना है, रालम बहुत कुछ याद करना है बेटा। 0.529 इंटू n स्क्वायर ओवर z एंगस्ट्रॉम, ये जो है दिस इज द वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसका मतलब nth ऑर्बिट की रेडियस जो है इट इज directly proportional to square of n and inversely proportional to atomic number of the species. N is shell number और Z is atomic number of species. तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए देखो, ये रिलेशन भी कभी पूछ सकता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना, पर ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, और इसको अलग अलग यूनिट में लिख सकते हो आप। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एक तो हो गया ये 0.529 n स्क्वायर ओवर z एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको पिकोमीटर में लिखूं तो हो जाएगा 52.9 इंटू n स्क्वायर ओवर z पिकोमीटर, क्योंकि यू नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ पर माइनस 10 मीटर और 1 पिकोमीटर जो है दैट इज 10 रेज़ टू पर माइनस 12 मीटर। सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ velocity of an electron in an orbit। ठीक है, बोर्स ऑर्बिट है ना, बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब आपने अभी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट कौन सा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटाइजेशन
एंगुलर मोमेंटम तो उसमें क्या होता है, क्या था, एम वी आर इक्वल टू दिस वन, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, दैट implies V is equal to NH upon 2 pi mr, right? So just put the value of r. r की वैल्यू लिखी थी अभी, तो r की वैल्यू यहां पुट करो, तो NH upon 2 pi m, r की वैल्यू पूरी पुट करो और v निकालो। r की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर और इंटू 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये था ना, n स्क्वायर h स्क्वायर है ना, और 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर है ना। तो यहां से एक n से एक n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, ठीक है, एक m से एक m कैंसिल, ठीक है, 2 पाई से एक पाई कैंसिल और 2 से ये आ गया 2 है ना। तो क्या आया, 2 पाई k z e स्क्वायर बाई एन एच कर दें तो इट इज 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। हुई क्या, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो इसको भी क्या लिखेंगे, vn। vn मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth Bohr's orbit। Bohr's orbit क्यों बोला इसको, क्योंकि this concept was given by Bohr है ना। तो nth Bohr's orbit में वैल्यू 2.18 into 10 raised power 6 into z by n मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, इंटू 10 रेज़ पावर 8, ठीक है। तो ये अपने वेलोसिटी आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। अब निकालते हैं टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने मीटर ये रिवॉल्व करता है ना, वेलोसिटी है ना, इतने मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे निकालना हो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के, वो एक सेकेंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of an electron in an orbit है ना। तो एक ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है बताओ, अगर रेडियस r है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, क्या बोलते हैं उसको, पेरीमीटर। बोलो पेरीमीटर कितना होगा, इसको, इसका पूरा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। एक रिवोल्यूशन का हमें टाइम निकालना है, तो एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, वेरी गुड, 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, डिस्टेंस होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, 2
2πr/v। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टाइम पीरियड निकाल लिया आपने, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 टाइम पीरियड, मींस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, टाइम पीरियड का ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आएगी। ठीक है, कि इतने रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और एक रिवोल्यूशन के लिए इतने सेकंड्स, ये सेकंड्स, ये पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, और ये सेकंड पर साइकिल, इतने सेकंड लगेंगे पर साइकिल। वही होगा ना टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मींस हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर द वन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। लिख दो, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन by an electron to complete one cycle, to complete one cycle, पूरा एक पूरा साइकिल है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या जाएगी? नंबर ऑफ साइकिल्स completed in 1 second. This is cycle per second, वो सेकेंड पर साइकिल। डन। तो ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। Calculation of total energy of an electron, total energy। तो बेटा total energy is equal to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दो तरह की एनर्जी होगी। ठीक है ना। अब पहले बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, और काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या रिलेशन होता है? यू नो, चलो काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई लिखता हूं, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को पी ई, और टोटल एनर्जी को लिखता हूं टीई। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एवरीवन नोस इलेक्ट्रॉन का m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है? एक न्यूक्लियस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज रिलीज्ड। तो रिलीज्ड जो होती है एनर्जी, तो उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन से। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी नेगेटिव, माइनस, है ना, और क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटू आर होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटू आर विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना। तो के जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटू आर हो जाएगा, तो एक आर कैंसिल। तो ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस
के जेड ई स्क्वायर ओवर आर, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इसका मतलब hence total energy is equal to half mv square minus k z e square by r, ठीक है। अब आपने ये रिलेशन भी पढ़ा था पिछले उसमें, किया ना हमने ये रिलेशन कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों बैलेंस होने चाहिए फॉर द स्टेबल ऑर्बिट, है ना। तो यहां से आपके पास mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये लिख देता हूं mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। तो ये आया mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। तो mv स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय के जेड ई स्क्वायर ओवर आर, तो के जेड ई स्क्वायर ओवर आर लिखोगे तो यहां से टोटल एनर्जी जो है वो हो जाएगी के जेड ई स्क्वायर ओवर 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर आर, राइट। तो यहां से इन दोनों डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर 2r, डन। टोटल एनर्जी आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर 2r, क्योंकि ये हाफ है और ये पूरा है ना। तो दोनों के देखो ये रिलेशन जो है ना, इससे ये वैल्यू आई, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है कि जेड ई स्क्वायर ओवर 2r, टोटल एनर्जी ये है अपने सामने, और पोटेंशियल एनर्जी ये वाली है ना। तो अब अगर हमें इन सब में रिलेशन फाइंड आउट करना हो, किसमें, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि कई बार ऐसा पूछता है वो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और हमें तो पता होता है टोटल एनर्जी, हमें लगता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देख लो टोटल एनर्जी, सॉरी चलो, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, बोलो क्या वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऊपर आई है, पोटेंशियल एनर्जी है ये अपने पास, that is minus k z e square r over r divided by total energy minus k z e square over 2r। ये पूरा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल 2 आएगा, that is potential energy is always equal to 2 times टोटल एनर्जी, याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है कि जो टोटल एनर्जी आएगी उसके 2 टाइम्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, गॉट इट। दूसरी बात करो काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर ओवर आर, 2r, ओके। और टोटल एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर ओवर 2r, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ओवर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1, और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। जो भी टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन है, आर भी पॉजिटिव होता है, के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जेड पॉजिटिव होता है, ये तो ई स्क्वायर है,
ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है और इसके आगे नेगेटिव है, सो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में जो रेशियो है दैट इज -1, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू 2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशंस समझ आ गया आपको। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी को आगे ले जाते हैं। टोटल एनर्जी जो अपनी आई वो आई माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r अगेन, तो ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r। r क्या था, n स्क्वेयर h स्क्वेयर इंटू 4 पाई स्क्वेयर m के जेड ई स्क्वेयर, ये आया। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 2 कैंसल, इसका मतलब और क्या कैंसिल हुआ, नथिंग, बाकी सारी चीजें आएंगी, है ना। तो ये आया 2 पाई स्क्वेयर m, फिर m e4 e स्क्वेयर k स्क्वेयर z स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर h स्क्वेयर। अगेन वैसे ही वैल्यूज हैं, ये वैल्यू एनसीईआरटी में एज सच दी हुई है कि ये वैल्यू, अच्छा माइनस साइन, सॉरी ये मत भूलना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर me4 k स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर इंटू h स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये सारी वैल्यू जो आई, उसके बाद अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू, e की वैल्यू, k की वैल्यू, h की वैल्यू सारी पुट करें, तो मैंने वैल्यू लिखाई थी, इट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर जूल और एटम, ये वैल्यू आती है बेटा। ठीक है, और यही वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने लिखवाई हुई है, वापस लिख रहा हूं 13.6 n स्क्वेयर z स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, and because 1 electron volt is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और तीसरा जो वैल्यू है दैट इज -1312 इंटू जेड स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। ठीक है, और चौथा वैल्यू -313.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर किलो कैलोरीज पर मोल। तो these are the total mathematical forms of the Bohr's postulates। 1 कैलोरी जो है that is 4.184 जूल। ठीक है, कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी को En से डिनोट करते हैं हम, En से भी, है ना, कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट मींस जो En है that is proportional to z square and inversely proportional to
n स्क्वायर। इसका मतलब एज z इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप हायर z मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और मतलब मोर क्या होती जाएगी, मोर नेगेटिव, है ना। और जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो एनर्जी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो हम कैसे बोलेंगे इसको कि z बढ़ने से एनर्जी क्या होगी, कम। मोर नेगेटिव मीन्स लेसर वैल्यू, है ना, और लेस नेगेटिव मीन्स मोर वैल्यू। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी of the electron at infinity? बोलो, what is the kinetic energy of electron at infinity? And what is potential energy of electron at infinity? बोलो, zero. Kinetic energy, potential energy, total energy, because n is in inverse, कि जब इंफिनिटी होगा नीचे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू जीरो एट इंफिनिटी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हमारी आ गई सारी, है ना। अब हम करते हैं इसका मतलब कि जैसे जैसे n इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे z इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है इसलिए, क्योंकि as n increases so total energy as n increases total energy becomes less negative, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव, इसलिए टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी। और as z increases so total energy becomes more negative. तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो n तो इनवर्स है तो टोटल एनर्जी के तो इनवर्स रिलेशन हुआ, बट आगे नेगेटिव साइन है, ये याद रखो। तो n इंक्रीज करने से टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, और z इंक्रीज करने से टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, ठीक, आपको मैंने बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, सो E1 किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो Z तो हो जाएगा 1, हाइड्रोजन एटम के लिए Z 1, तो Z को तो हटा दो। तो एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता हूं तो ये हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मींस -13.6 ओवर 4, कितना हो गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मीन्स -13.6 बाई 9 -946 हो गए, 1.5 अराउंड, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E4 निकाल लेते हैं लास्ट, -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाई 16, I1 है ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट।
और यही वैल्यू इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी, ये इंफिनिटी, ये इनफिनिट पुट करोगे तो 0। अब इसको आप ऐसे लिखो एनर्जी, ठीक है, सबसे ऊपर तो 0 आएगा, एनर्जी का देखते हैं, ठीक है, यहां एनर्जी है 0, तो n है इनफाइनाइट, राइट। अब बताओ कि ये वैल्यू 0 से कम हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी इनमें से, ऑब्वियसली -0.85 लिखोगे, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन कितना है 4, फिर इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन कितना है 3, और इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैल्यू है और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। प्रूफ 1, देखो n1 था तो -13.6, जब n2 हुआ तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, -3.4 होगी, और बढ़ी n=3 पे तो -1.51 होगी, n4 पे और ज्यादा बढ़ गई तो -0.85 होगी, और बढ़ी तो n पे 0 होगी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो डेरिवेशन आपने की हुई है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। So you know radius of nth orbit is, बोलो याद है, 0.529 into n square और z एंगस्ट्रॉम, और 52.9 into n square और z पिकोमीटर। तो बताओ what is the radius of Bohr's fifth orbit of hydrogen atom। इसने कोई लिखा नहीं कि किस यूनिट में, तो लेट अस टेक इन एंगस्ट्रॉम। तो देखो रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो यू नो फॉर हाइड्रोजन एटम z is 1 and as it is fifth orbit n is 5, so 0.529 into 5 square divided by 1, that is 0.529 into 25, and it comes out to be 13.225 angstrom. What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 drops to the ground state,
करो, do it fast. मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन जो है इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2. ठीक है. नाउ यू नो n इज 6 into 6 minus 1 divided by 2. So 6 into 5 over 2 means 50. Okay. Or if you go like this, n equal to 6, n equal to 5, n equal to 4, n equal to 3, n equal to 2. These are the various lines. So n is equal to 4. It can be 6 to 5, 6 to 4, 6 to 3, 6 to 2, 6 to 1. Means how many lines? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines. Right? Now, n equal to 5. 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1. Means 4 lines. 4 to 3, 3 to 2, 4 to 2, 4 to 1 means 3 lines. 3 to 2, 3 to 1 means 2 lines. 2 to 1 means 1 line. So how many lines? 5, 4, 3, 2, 1. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 9, 12, 13, 14, 15. These are the 15 lines. But there is no need to calculate like this, because already given calculate only what is maximum number of lines. They don't need any explanation. Okay, so just apply the formula. Okay, and if you would like to see how these 15 lines come, so it is like this. From 6 it can go at any level, 5, 4, 3, 2, 1. From 5 level electron can go from 4, 3, 2, 1, because emission line means when higher electron comes from higher level to lower level. 4 to it can come to 3 to 1. From 3 it can to 2 to 1, 2 or 1, and 2 to 1 only. So total lines 50. Question is how much energy is required to ionize a hydrogen atom if an electron occupies n equal to 5 orbit compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom and energy required to remove the electron from n equal to 1 orbit.
ऑर्बिट। देखो पहले है इलेक्ट्रॉन 5th लेवल पे, तो उसको निकालने में कितनी एनर्जी यूज होगी, और दूसरी बार है इलेक्ट्रॉन 1st लेवल पे, तो उसके लिए कितनी एनर्जी यूज होगी टू रिमूव इट। आयोनाइज करना मतलब लिख लो आप, आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइजेशन मीन्स removal of electron from the atom। इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर दो तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, रिमूव होके इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब है when there is no attraction between the electron and the nucleus, right? So एक बार इलेक्ट्रॉन है 1 पे और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन है 5th लेवल पे। इन 2 लेवल पे इलेक्ट्रॉन है और उसको जाना कहाँ है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी होता है, 0। सो एक तो 1 लेवल से यहां जो है उसको बोलेंगे आयोनेशन एनर्जी, है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1। और ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम की आपको पता है सबको, आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, जूल पर एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बच्चों आप लोग जो है क्या करना है आपको, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम। पहले इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, और दूसरी बार उसको कंपेयर करना है किससे, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में हो। What is the energy of the electron in nth orbit? Energy of the electron in nth orbit. बोलो, what is the energy of electron in nth orbit of hydrogen atom? In joule per atom. Energy of the electron in nth orbit is minus 2.18 into 10 raised power minus 18 over n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता है। तो वो अब जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये जो है nth ऑर्बिट की एनर्जी है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, आयोनेशन एनर्जी, है ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन n इक्वल टू 5, 5th लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आयोनेशन एनर्जी होती क्या है, मैंने अभी बताया, लिख लो अगर नहीं पता है तो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कंप्लीट रिमूवल, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली हटा देना है। तो हट के जाएगा कहां, इन्फिनिटी पे। तो एनर्जी कितनी आएगी, E5 माइनस E, मतलब ये होगा E इंफिनिटी माइनस E5, राइट। और E इंफिनिटी कितनी होती है बोलो, 0। सो एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। So 0 minus E5, that means minus E5 only. So E5 means n is 5. So it is minus 2.18 into 10 raised power minus 15 divided by 5 square. So it becomes minus 2.18 into 10 raised power minus 15 over 25. So value comes out to be 8.7, sorry, minus 18, 8.7 into 10 minus 20 joule per atom, right? क्योंकि इसको 218 ले लेंगे into 10 raised to minus 20। सो ये आया आपके पास फर्स्ट लेवल के लिए, ठीक है ना, ये 5th लेवल के लिए। अब दूसरा
दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन n इक्वल टू 1, फर्स्ट लेवल पे है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगेन इक्वल टू E infinity minus E1, and this is 0 minus E1 is equal to minus E1. So minus and it become plus, sorry E5 तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, है ना, ओके, सो प्लस 2.18 into 10 raised power minus 18 over 1 square joule per atom. Means simply it is 2.18 into 10 raised power minus 18 joule per atom. This is the value, right? So if we compare these ionization energies, then so this ionization energy can be written as ionization energy 5 and this is ionization energy 1. So ionization energy 5 divided by ionization energy 1 is equal to, see, this is simply 8.72 into 10 raised to minus 20 divided by 2.18 into 10 raised per minus 18, and this value you know it is 2.18 into 10 raised per minus 18 divided by 25. So this value comes out to be 1 upon 25, that is 0.04, right, 4 over 100. So this is the comparative study, that fifth ionization energy is equal to 0.04 times the first ionization energy. This is called first ionization energy, this is fifth ionization energy. Means simply if electron is from fifth level, then that is that 0.04 times the first ionization energy, that value is needed to remove it. Okay, that means if electron goes up, it is easier to remove. वैसे भी पता है कि अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी. एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास है, दूसरा दूर है, so obviously this electron is difficult to remove and this electron it is easier to remove. एक्चुअली बोर्स मॉडल जो था ना, एक फर्स्ट सिस्टेमेटिक मॉडल था जिसने एनर्जी बता दी सेटिस्फैक्टरली, रेडियस बता दी, है ना, वेलोसिटी, वी हैव डिराइव्ड ऑल द रिलेशंस, राइट. बट उसकी पहली बात ये थी कि वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स. सो इट फेल्ड इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, पहली लिमिटेशंस. दूसरा पॉइंट कि उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आता है, हायर से लोअर, जैसे 5 से 4, तो देयर इज ओनली वन स्पेक्ट्रम लाइन. बट एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, देयर आर मोर देन वन लाइंस, सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई दीज लाइंस आर देयर, है ना. फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थे, उसमें वो स्प्लिट हो रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं. वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाई देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. स्पेक्ट्रल लाइन मींस वही एमिशन लाइंस, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. फिर he could not explain why atoms combine to form a molecule. Combination of atoms जो था, chemical bonding, he could not explain. Then
जो उसको बिगेस्ट ब्लो, मेजर जो ब्लो लगा वो था, अगली जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, पार्टिकल है और उसकी एनर्जी भी है, उसका रेडियस है, एक पर्टिकुलर लेवल है और उसके बाद उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है। तो इन्होंने बोला कि डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल मीन्स इट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो। और हेजनबर्ग ने बोला कि ये जो बोल रहा है ना फिक्स्ड ऑर्बिट, उसने कंसेप्ट ही ऑर्बिट का खत्म कर दिया। उसने बोला कि देयर इज नॉट फिक्स्ड पाथ्स, स्टेशनरी पाथ्स, देयर आर प्रोबेबल पाथ्स, देयर इज प्रोबेबिलिटी। उसने ऑर्बिट का कंसेप्ट को चेंज करके ऑर्बिटल कंसेप्ट पे ले आया। ये लिमिटेशंस हैं, मैं एक एक करके लिखता हूं, देन आई कुड एक्सप्लेन। राइट, फर्स्ट तो उसके ही कुड सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट था द थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, द थियरी कुड नॉट explain the atomic spectra of the atoms, the atomic spectra of atoms containing more than one electron, or we can say multi electron atoms। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये क्लियर हो गई कि ही कुड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बताया ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, सॉरी लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, वो सारी सीरीज बताई थी ना, वो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन की, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम्स के लिए। बट उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा, ओके, सेकंड इज Bohr's theory predict only, मैंने बताया था अभी, only one spectral line, only one spectral line for the electronic transition between two energy levels। ठीक है, उसने बोला कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से आया और टू पे आया, फिफ्थ से टू पे, तो देयर इज ओनली वन लाइन, बट व्हेन दे केयरफुली एग्जामिन्ड there are sometimes more than one lines। ठीक है ना, तो वो more than one lines क्यों आई है ना, क्योंकि उसने सिर्फ शेल की बात की थी, उसके अंदर सब शेल होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, वो हम करेंगे आगे, वो उस तक नहीं पहुंचा था। That's why he could not explain why is it so, है ना। So उसने बोला कि however if carefully examined, certain single lines are found to contain
a number of फाइनर लाइंस, उसके अंदर भी और छोटी छोटी लाइंस होती हैं, है ना। तो बोथ है फेल टू एक्सप्लेन the fine structure of the spectral lines। फाइन स्ट्रक्चर उसका मतलब फाइन स्ट्रक्चर जो था स्पेक्ट्रल लाइंस का, उसको वो एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं था, मतलब he was not successful to explain why। कि उसने ये तो बता दिया, ये तो समझ गए ना कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए फेल हो गया। और मैंने जो बताया आपको कि फिफ्थ लेवल से मान लिया 3 लेवल पे आया, तो उसने क्या बोला, देयर इज ओनली वन लाइन। बट एक्चुअली क्या होता है, जो शेल्स होते हैं ना, ये एनर्जी लेवल एक ऑर्बिट का, पर ऑर्बिट के मतलब शेल के अंदर भी देयर आर सब लेवल्स, लेवल के अंदर भी सब लेवल होते हैं, वहां तक ही कुड नॉट रीच, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये सेकंड लिमिटेशन उसकी बन गई। ओके, नाउ थर्ड, third limitation is in the formation of line spectrum, when the source emitting these radiations is subjected to the influence of electric or magnetic field, each spectral line is found to split into a number of lines। So splitting of spectral lines in magnetic field is called Zeeman effect। Zeeman effect is splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, or Stark effect, splitting of spectral lines in the presence of electric field। ये splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, और ये Stark effect is splitting of spectral lines in the presence of electric field। डन। तो ये जो दो हैं, Zeeman effect और Stark effect, it could not be explained by Bohr's model। ये उसकी नेक्स्ट लिमिटेशन थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज Zeeman effect, तो आप लिखोगे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और Stark effect पूछेगा तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ओके, ये हो गया। तो Bohr's theory could not explain these effects satisfactorily।
तो यहां भी ये fourth theory failed to explain combination of atoms, shape of the molecules, formed by the combination of atoms. क्यों दो एटम या तीन एटम कंबाइन होके ट्राइगोनल प्लेनर बना देते हैं, टेट्राहेड्रल बना देते हैं, वो शेप्स उसने कुछ उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मतलब केमिकल बॉन्डिंग जो है इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. ओके, देन फिफ्थ वन जो मैंने आपको बोला, द सीरियस ब्लो टू बोर्स मॉडल of atom came from certain new principles such as de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle. ये जो दो प्रिंसिपल थे, एक तो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस दी उसने और दूसरा हेजनबर्ग ने बोला, ये दोनों जो हैं ये तो he could not even reach up to that level कि ये प्रिंसिपल उसके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया था. बट वो ये जो डी ब्रोगली था इसने क्या बोला, इसके बाद यही करेंगे हम. डी ब्रोगली ने बोला कि there is dual nature of matter. कि मैटर जो है उसका कैसा नेचर होता है, ड्यूअल. ड्यूअल मीन्स इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. ठीक है. और जो दूसरा था कौन, हेजनबर्ग, अनसर्टेन प्रिंसिपल के थ्रू बोला उसने कि देयर आर नो फिक्स्ड पाथ. जो पहले बोला था कि देयर आर फिक्स्ड पाथ, rather there are probable path for electron. Probable paths for electron in an atom. अगर आपको मान लिया 2 मार्क्स में आता है, मैंने डिटेल में इसलिए लिखवाया कि इसमें से आप अपनी तरफ से अच्छे से लिख लो. अदरवाइज क्या लिखना है आपको, देखो फर्स्ट कि he failed for multi electron atoms, खत्म हो गया पहला पोस्टुलेट. दूसरा कि जो लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस, when electron jumps from one level to another level, there is a single line according to Bohr's, but there is more than one lines. Final इतना लिख दो. He could not explain. चलो मैं लिख ही देता हूँ. अगर आपको मान लिया शॉर्ट में लिखना हो ये सारा, है ना, मैंने डिटेल में इसलिए लिख दिया ताकि ऐसा ना हो मैं शॉर्ट लिखूं आप उससे भी शॉर्ट कर दो एग्जाम में. ठीक है.
अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो फर्स्ट लिखोगे कि Bohr theory could not be applicable to multi-electron atoms. ठीक है, दूसरा, he could not explain fine structure of atoms. तीसरा, he could not explain the Zeeman effect and Stark effect. फिर he could not explain shape of molecules. फिर he could not explain de Broglie equation and Heisenberg uncertainty principle. That's it. तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। वो मैंने आपको डिटेल में इसलिए लिखवाया ताकि अगर मान लिया आपको वो सारा पढ़ लोगे तो यू हैव एन ओवरव्यू, है ना। तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दोगे, बट सिर्फ यही लिखा होगा और आप यही भूल गए कि व्हाट इज Zeeman effect, splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, Stark effect, splitting of spectral lines in the presence of electric field, ठीक है ना। इसलिए मैंने डिटेल में लिखा, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस ओनली। नाउ नेक्स्ट इज de Broglie equation. देखो डी ब्रोगली इक्वेशन में डी स्मॉल है ना, और ब्रोगली का बी कैपिटल है, ठीक है। आई थिंक जर्मन लैंग्वेज ऐसा होता होगा, है ना, तो ये याद रखना, ठीक है। ओके, सो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? एक्चुअली डी ब्रोगली जो है ना, वाज हाईली इंस्पायर्ड पर्सन। उसने देखा कि जब लाइट जो है, लाइट, आइंस्टाइन ने बता दिया था कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, है ना। तो जब आइंस्टाइन का उसके कंसेप्ट आया तो उसने बोला व्हाई नॉट इट इज एक्सटेंडेड टू पार्टिकल, इफ लाइट हैज ड्यूअल नेचर देन व्हाई नॉट पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर। सो ही कंटिन्यू टू हाइपोथेसाइज। तो उसने हाइपोथेसिस दी, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। देखो उसकी सोच, मतलब वो कितना दूर तक सोचता होगा। उसने हाइपोथेसिस दी, इसलिए कई बार यहाँ लिखा होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, थीसिस नहीं लिखी है पूरा, आपने सिर्फ सोचा और वो अपने पेन पेपर लेके लिख दिया, समझ रहे हो। मतलब थियोरी दी, थियोरेटिकल कंसेप्ट दिया उसने। और कंसेप्ट क्या था कि जस्ट लाइक light, particle has dual character. और फिर उसने बताया if m is mass of particle and v is speed of particle, v क्या है, speed of particle, then wavelength
the wave associated with particle. Keep in mind, this wave is associated with particle. It is not emitted by the particle. Wavelength of the wave associated with the particle, and is called as the particle, that is lambda equal to h upon mv. And you know m into v, momentum, so that is h over p. That implies lambda is inversely proportional to p. Lambda gives us wave nature and momentum gives us particle nature. That implies wave nature of the particle is inversely proportional to its particle nature. But this wave associated with the particle is not an electromagnetic wave. The wave associated with the particle is the wave associated with the particle is called matter wave or de Broglie wave. That is called matter wave or de Broglie wave. So simply हम उसको बोलते हैं matter wave. और wave nature is represented by lambda, wavelength, and particle nature by momentum. So lambda equal to h upon mv or lambda equal to h upon p. P is momentum. P is actually momentum of particle. Okay, ये रिलेशन समझ में आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. इस रिलेशन को फर्दर और एक्सटेंड करते हैं. देखो, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको नंबर 1 दे दो ना, इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv square. That implies mv square equal to 2 into kinetic energy. Multiply m on both sides. That implies m square v square equal to 2 into m into kinetic energy. Means m into v जो है, that is square root of 2m into kinetic energy. So lambda equal to h upon mv, h upon square root of 2m into kinetic energy. So if kinetic energy is given, you can go with this relation. Okay? Now, if an electron is there, if an electron is accelerated by a potential difference of v volt, then kinetic energy is equal to E into V. Kinetic energy is equal to EV.
ये काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m eV. E is the charge on the electron and V is the voltage, potential difference, right? इसको Q भी ले सकते हो आप, right? So you know H is 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second. M is 9.11 into 10 raised power minus 31 kg. E is charge on the electron, magnitude of the charge है ना, तो 1.602 or 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. If we put the values, then lambda comes out to be 12.27 divided by V angstrom. This is also very important relation. This is applicable for electron only. So अब इस पे हम नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करेंगे और पहले इसका पूरा डी ब्रोगली इक्वेशन का बाकी डेरिवेशन ये वो सब करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. बट ये डी ब्रोगली इक्वेशन का पूरा आ गया आपके पास. टुडे वी विल कंटिन्यू डी ब्रोगली इक्वेशन. वी हैव कवर्ड द रिलेशन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m into kinetic energy. So this is the relation for de Broglie equation. De Broglie equation अब देखो ये जो de Broglie equation है, how it is derived वो हम आज करने वाले हैं कि derivation of de Broglie equation. So first of all, this de Broglie equation is derived for photon. किसके लिए derive किया? Photon. Photon is packet of light. तो photon को एक particle की तरह consider करके उसमें by applying Planck's quantum theory and Einstein mass energy relationship उसके लिए derive किया पहले. ठीक है? So let us take example कि a photon of speed कितनी होती है स्पीड फोटोन की c and its wavelength is lambda. So according to Planck's quantum theory, तो पता है आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू और लैम्डा की टर्म में E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, बिकॉज वी नीड लैम्डा है, राइट? सो E इक्वल टू एच न्यू और एच सी ओवर लैम्डा, ये प्लैंक्स इक्वेशन है. ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है. और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है वेवलेंथ. ठीक है, h आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट और c है स्पीड ऑफ लाइट. एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है? E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. एनर्जी मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी व्हेन लाइट फॉल ऑन इट. ओके, सो E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ओके, गुड इवनिंग. अच्छा, मानसी इज आल्सो देयर, राइट? तो ये दोनों टर्म्स जो है E एच सी और लैम्डा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एज पर Einstein mass energy relationship. So equate them. This is equation 1, equation 2. So equate them. If we equate them, hc over lambda is equal to
mc square. So 1c cancel. That implies lambda equal to h upon mc. So this is the relation for photon. Wavelength of photon, m is mass of photon, c is speed of photon. Now if v is speed of particle, means it is applied to the some particle. If v is speed of particle, then c is replaced by v, then lambda is wavelength associated with particle, and this relation becomes आ जाएगा नहीं यहाँ पे lambda equal to h upon mv, and that is de Broglie equation. दिख रहा है नहीं? तो lambda equal to h upon mv we can derive by using Planck's quantum theory and Einstein mass energy relationship. समझ में आ गया? प्लैंक्स के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये अपने पास वैल्यू आ गई. m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, h प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो ये इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं इसको. डन? ओके. अब ये डेरिवेशन हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन का. नेक्स्ट पार्ट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ particle nature and wave nature of electron. अब देखो, इलेक्ट्रॉन वैसे हम क्या मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन की सम स्पीड होगी, तो इलेक्ट्रॉन हैज मोमेंटम. जिसका भी मोमेंटम होता है दैट इज अ पार्टिकल. ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के लिए जो हम बात करते हैं, दो फिनोमिनन याद रखना. ये अब सिलेबस से हट गए हैं, बट वी विल डू इट आफ्टर सम टाइम. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये दो फिनोमिनन जो हैं दे आर एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पार्टिकल नेचर जो है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दीज टू फिनोमिनन. ठीक है, वी विल डिस्कस देम इन लेटर स्टेज. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आता है कि गिव टू मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, ओके, ये हो गया. फिर हम बात करते हैं कि वेव नेचर. तो वेव नेचर के लिए जो है ना, वो अगर आपने नहीं सुना होगा वैसे तो, है ना, एक्सपेरिमेंट किया था किसने, डेविसन एंड जर्मन. इन 1927 ये दो साइंटिस्ट जो हैं दे डिड एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स लिया, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट ले लिया, हीटेड जो सोर्स था इलेक्ट्रॉन का उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया तो दे गेट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, और फिर उसको स्ट्राइक करवाया. ठीक है, क्रिस्टल से. ठीक है, निकल क्रिस्टल से. जब ये स्ट्राइक करवाया और उसका जो पैटर्न था वो फोटोग्राफिक प्लेट पे
जो है वो कलेक्ट किए, तो उन्होंने देखा कि देयर आर कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक हो और ऐसे बढ़ती जाए, साइज बढ़ता जाए, मतलब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो बनी। दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया समझ आया? उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का सोर्स लिया, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करने से क्या होता है, उनके स्पीड और बढ़ जाती है, दे गेट एक्सेलरेटेड एंड देन दे स्ट्राइक द निकल क्रिस्टल। आगे उन्होंने निकल क्रिस्टल रखा, उस पे जब से स्ट्राइक किया और जो भी डिफ्रैक्शन हुई इलेक्ट्रॉन की, उसको उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट किया, तो दे मेड दिस थिंग, उनको ये मिला, ये कंसेंट्रिक रिंग्स मिले, ये था डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कंपेयर्ड विद एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न, सो दे लुक सिमिलर। वो कैसे दिख रहे थे? एक जैसे। देखो जो एक्स-रेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न था, एक्स-रेज आर वेल नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उन्होंने देखा कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न आर अलाइक, they are similar. So in this way उन्होंने एनालाइज किया और बताया कि एक्सरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। पहले टंगस्टन फिलामेंट लिया, that is behaving as electron source, then it is passed through electric field, electron beam gets accelerated और फिर उसको निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करवाया, सो इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफ्रैक्टेड, ठीक है। और डिफ्रैक्शन के बाद जो पैटर्न आया, दे आर द कंसेंट्रिक रिंग्स, और वो जो रिंग्स बनी डिफ्रैक्शन पैटर्न की टाइप में, दे आर सिमिलर टू एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो उससे उसने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो अ वेव नेचर, बिकॉज एक्स-रे हैज वेल नोन वेव नेचर। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन? तो लिमिटेशन क्या है इसकी? फर्स्ट और फॉरमोस्ट कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और भी कैसे डी ब्रोगली इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट for microscopic objects, like electron, proton, neutron, even atom, ion, but it is not significant for semi-micro or macro, semi-macro or macroscopic particles, means it is not applicable for heavier objects. Okay,
because their wave character is negligible, because their wave character is wave character क्या होता है? Negligible. For example, let us take electron and a ball. एक इलेक्ट्रॉन है और एक है बॉल, और बॉल का जो मास है वो है बॉल ऑफ 100 ग्राम. ठीक है, ठीक है, ये केस है. और दोनों जो हैं दे आर मूविंग विद द स्पीड of 10 raised power 5 meter per second. Let us take example. Both are moving with the speed 10 power 5 meter per second. Now let us calculate the wavelength associated with these particles. One is electron and other is ball of mass 100 gram. 100 gram is how many kg? 0.1 kg. ठीक है. So lambda, you know, it is equal to h upon mv. So for electron, mass of electron, velocity of electron. For ball, lambda, mass of ball into velocity of ball. ठीक है. तो h is, you know, 6.626 10 raised to minus 34 joule second divided by 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. Use SI unit into 10 per 5 meter per second. And for this, again, sorry, 6.626 10 raised to minus 34 joule second divided by mass of the ball, that is 0.1 kg into 10 raised to 5 meter per second, right? So just calculate. So values comes out to be 7.27 into 10 raised to 9 meter, and for second one value comes out to be 6.626 into 10 raised to minus 38 meter. Wavelength of the electron comes out to be 7.27 into 10 raised to 9 meter, but here it is, sorry, minus 9 meter, and it's 6.626 into 10 raised to minus 38 meter. So this value is in the electromagnetic range of electromagnetic radiations. This value is, for electron, value is in the range, but this value is very, very less. Wavelength is too small to be counted. It is negligibly small. 10 raised to minus 38 meter. Okay, that's why it is significant only for electron. Okay, for heavier objects, even semi-micro objects, 0.1 kg is nothing. Okay, for that even this is not applicable. Okay, that is a limitation. De Broglie equation is only for the moving microscopic particles. It is applicable for moving microscopic particles only. Find the wavelength of a particle of a 100 gram particle, of a 100 gram particle with a velocity
with a velocity of 100 meter per second. Do it. You will do. Meantime, I am writing what is given. See, wavelength of the particle, that means lambda we have to calculate. Sometimes students don't know what is the formula used and which concept is applied on this particular question. So see, when there is a question of wavelength of the particle, always keep in mind this is de Broglie equation. Concept of de Broglie equation. Lambda we have to calculate, mass is given to you and velocity is given to you. That's it. 100 gram particle and velocity is 100 meter per second. So 100 gram means same question, 0.1 kg. So according to de Broglie equation, lambda equal to h upon mv. What is h? 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second divided by mass 0.1 kg into 100 meter per second. So when we apply, from here it is it is 10, so it becomes simply 6.626 into 10 raised power minus 35 meter. So this is the question. What we think wavelength of the particle. Whenever there is a wavelength of the particle, there is always de Broglie equation. Any particle, electron, proton, ball, right? So we apply de Broglie relation. So for that we need m and v, mass and velocity. Okay? And if kinetic energy is given, we have different equation. If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 raised power 6 meter per second. Calculate the de Broglie wavelength. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. This is the question. Do it. Velocity of the electron is given to you and you have to calculate de Broglie wavelength associated with it. Just do it. First of all, velocity is given, velocity of electron in Bohr's first orbit. It is 2.19 into 10 raised power 6 meter per second. And we have to calculate wavelength, de Broglie wavelength. So lambda we have to calculate. Nothing else is given, right? So according to de Broglie equation, lambda equal to h upon mv. Now h
everyone knows it is 6.626 into 10 to power minus 34 joule. Second, mass of electron, that you should know, 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. Okay, so from here lambda equal to 6.626 into 10 raised power minus 34 divided by 9.1 into 10 raised power minus 31 kg into 6.62 into 2.19 into 10 raised power 6 meter per second. So see, when minus 34 it is plus 31 and 6 minus 31 or 6 25 minus 25 minus 34 plus 25, it is not added up. Okay, minus 34 and plus 25 sorry. So 6.626 divided by 9.1 into 2.19 into 10 raised power minus 34 plus 25 बेटा, not minus. यहाँ पे गलती कर दी बेटा आपने रालम, it is minus. You have written it minus. Actually, see, minus 31 plus 6, so it become minus 25. When it goes in the numerator, it become plus 25. Okay, so in this way नीचे लिख सकते हैं क्या? It is 0.332 into 10 raised power minus 9. Okay, it is 0.332 into 10 raised power minus 9 meter. Okay, mean 0.332 nanometer or 332 into 10 raised power minus 12 meter, and this is picometer, so 332 picometer. Okay, लिख सकते हैं ना, so it is 332 picometer. So this is the answer. Question is similar to electron diffraction, neutron diffraction, microscope is also used for determination of structure of molecule. This is just an information, don't worry about this whole thing. Question is, if the wavelength of the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity
associated with the neutron. This is the question, that just like electron diffraction, there is a neutron diffraction microscope which is used to determine the structure of the molecule. If wavelength used here is 800 picometer, so we have to calculate characteristic velocity associated with the neutron. Okay, this is again a particle, wavelength is given, mass of neutron you need, only mass of neutron, that I will write. It should be given, actually if it is not given I will give you the value mass of neutron, that is 1.675 into 10 raised power minus 27 kg. See, similar to electron diffraction, neutron diffraction is used for the determination of the structure of molecule. I will write the values given, wavelength of mass of electron, then lambda is given, mass m, wavelength is 800 picometer, and velocity we have to calculate. Again we apply de Broglie equation. So according to de Broglie equation, lambda equal to h upon mv. So that implies v is equal to h upon m lambda. H is 6.626 into 10 raised power minus 34 divided by m. M is 1.675 into 10 raised power minus 27 kg. See, mass is in picometer, so you have to convert it into meter in SI units, right? So it is 800 into 10 raised to power minus 12 meter. Got it? So by using this all, see, it is 6.626 divided by 1.675 into 8 into 10 raised to power minus 34 plus 27 plus 10. Because if this part 800 into 10 raised minus 12, it is 8 into 10 raised power minus 10. So ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 raised to power 10, तो ये हो जाएगा. So ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करके आता है 0.494. इज इट राइट? बाकी को पूछ लो. इंटू 10 रेज टू पावर देखो 37 और ये 34, तो 3 हो गया ना मीटर पर सेकेंड. मीन्स इट इज 494 मीटर पर सेकेंड. Okay, next question is dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron, discovery of electron microscope. Often used for
highly magnified images of biological molecules and other type of materials. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 10 raised per 6 meter per second, calculate de Broglie wavelength associated with this electron. See, this first part of this question, that is dual behavior of matter, that is proposed by de Broglie, led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of material. This can be used at advantage of de Broglie equation. This is advantage of de Broglie equation. Okay. Limitation, you know, it is applicable for microscopic objects, and this is the advantage, that it led to the discovery of electron microscope, which is used for magnification. Okay, highly magnified images of biological molecule. Okay, this is the information, just like electron microscope and neutron microscope. Okay, if the velocity of the electron, this is the question actually. If velocity of the electron in this microscope is this, so what is the wavelength of particle or de Broglie wavelength associated with the electron? Okay, see here velocity is given 1.6 into 10 raised per 6 meter per second, and this is electron. So mass is 9.1 into 10 raised per minus 31 kg. Value of H 6.626 into 10 raised per minus 34 joule second. Okay, so now lambda is equal to H upon mv. H is 6.626 into 10 raised per minus 34. M is 9.1 into 10 raised per minus 31. 1.6 into 10 raised per 6. Right? It is in kg meter per second. Keep in mind, all are in SI units. All should be in SI units. Okay. Then 6.626 divided by 9.1 into 1.6 into 10 raised to power minus 34, and this is again minus 25. So minus 34 plus 25. Minus 34 and plus, because 31 plus 6. Minus 31 plus 6. So it is minus 25. So ऊपर जाके plus 25. So value comes out to be below 10 raised per minus 9. Value is 10 raised to power minus 9, and this value
as you calculated, see below it, it is bigger number than this, so it is 0. You have calculated 455 or 461 whatever, so this is the value, means value is 0.455 nanometer, or if we write 455, then it is 10 raised power minus 12 meter, so it is 455 picometer, right? Heisenberg uncertainty principle. Now, as the name suggests, it was given by Heisenberg in 1927. Uncertainty means something is not certain. What is not certain related to atom, that we are going to discuss. Actually, according to Bohr's model, a particle has only, क्या बोल सकते हैं कि Bohr's model के according radius is fixed, energies can be calculated, but when de Broglie came into picture, he said that electron has dual nature, that is particle nature as well as wave nature, and then that is applicable for, dual nature is applicable for mainly for microscopic particles. For macroscopic or semi micro particles, it has no significant effect, that has very negligible wave character, but electron, proton, neutron, means microscopic particles, that has dual character, and that's why their energy and position cannot be measured accurately. Okay? That is actually Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, it is not possible to measure exact position and exact momentum of microscopic particles with accuracy. Means position or momentum को accurately we cannot find out, ठीक है, simultaneously, accurately and simultaneously. Means to determine exact position and exact momentum simultaneously, it is not possible. Means एक साथ दोनों को exact हम find out नहीं कर सकते, ठीक है. So this as per mathematics, so mathematically according to this principle, delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. So this is the minimum uncertainty in the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum. What is delta x? It is uncertainty in position, and delta p, it is uncertainty in momentum. Okay, so their product
is greater than or equal to h upon 4 pi. For numerical purpose, we use delta x into delta v equal to h upon 4 pi. That's it. Okay. Now, you know, as p equal to m into v, linear momentum equal to mass into velocity. That implies delta p equal to m into delta v. So it means delta x into m delta v is greater than or equal to h upon 4 pi, or delta x into delta v equal to or greater than or equal to h upon 4 pi m. M is mass of the microscopic particle. So this is definition of Heisenberg uncertainty principle. अगर कोई पूछता है कि define this Heisenberg uncertainty principle, so already हो गया. It is not possible to measure exact position and exact momentum of microscopic particles with accuracy and simultaneously. ठीक है. Or you can write it as simultaneously here, that it is not possible to measure exact position and exact momentum of microscopic particles simultaneously with accuracy. You can write it as, I think you could understand कि simultaneously position और momentum या position और velocity cannot be determined. ठीक है. तो delta v क्या होगा यहाँ पे, definition तो लिख दिया आपने. Now what is delta v? Delta v is uncertainty in velocity, right? For numericals, what we use delta x into delta p equal to h upon 4 pi, or delta x into delta v equal to h upon 4 pi m. These are for numericals. We write equal sign, equal to sign. Okay. Right. Now, case 1. If delta x is small, that means uncertainty in position is less. That means if position is, okay, position is measured accurately, then what about delta p and delta v? Because their product is equal to h upon 4 pi. If it is small, then it should be large. Then delta p or delta v is large, means uncertainty in momentum or velocity is large. We cannot measure position or measure momentum or velocity accurately, and vice versa. Like case 2, if delta p or delta v is small, then obviously
delta x is large, what it means? That if uncertainty in position or uncertainty in velocity is small, that means momentum or velocity of the microscopic particle is measured accurately, then position cannot be measured accurately, right? And third case, if delta x equal to 0, then delta p is infinity. Got it? That means if we measure the position accurately, then momentum cannot be measured. Position, delta v, delta p or delta v is infinity. That means then momentum and velocity cannot be measured at all. We cannot measure them. समझिए? Simple है? This is all definition and its explanation. Now significance. Significance. अब देखो, anything if we would like to see, then what happened? Light fall on it and that light comes to our eye. लाइट उसको क्या करेगी? इल्यूमिनेट करेगी, है ना? लाइट की प्रेजेंस में देख सकते हैं ना, रात को अंधेरा हो, कोई लाइट ही ना हो तो कोई चीज दिखती है? नहीं देख पाते। इसका मतलब लाइट इज एसेंशियल टू सी एनीथिंग। तो कोई चीज अगर हमें देखनी है ना, let's take an electron. This is an electron. Now electron is a microscopic particle, you know that. Now this particle, if we are going to see, then what happened? The light fall on it and that light reflected back to our eyes. Okay, so the photon will strike. Photon has certain frequency, certain wavelength, okay, and that photon will strike it and come back to our eyes, then we can see it. What you know, microscopic particles, they are very very small in size, very very less in mass. They can be easily deviate from its side, okay. So when this photon strike and it goes back from this side, this electron will move from here because that photon has some energy. When energy strike it, it moves from here. Now light comes from this side, but it is moving somewhere else. So exact position we cannot measure. So according to optics, position of a particle can be measured within प्लस माइनस लैम्डा, मतलब प्लस माइनस लैम्डा के बीच में देख सकते हैं। इसके बीच में पार्टिकल को वी कैन सी, मतलब ये पूरा एक सर्कल बना, अगर इससे छोटा पार्टिकल होगा देन वी कैनॉट सी इट विद एक्यूरेसी। इसलिए उसने बोला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लिए हमें ये फंडा लगेगा कि देयर इज नो डेफिनेट पाथ। तो एज पर दिस
ये वाला जो चीज है, इसको अगर हमें पोजीशन को एक्यूरेट करना है तो क्या करेंगे हम? टू गेट एक्यूरेट पोजीशन, we have to decrease wavelength of light या wavelength of radiation। तो वेवलेंथ अगर हमने डिक्रीज कर दी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ डिक्रीज करने से फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो हाई एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करेगा तो और फास्ट वहां से मूव कर जाएगा ना। तो क्या होगा, उसकी मोमेंटम और स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी। यही हमने पढ़ा ना अभी। तो इसका मतलब कि लैम्डा डिक्रीज किया टू एक्यूरेट द पोजीशन, टू गेट द एक्यूरेट पोजीशन, देन मोमेंटम एंड वेलोसिटी बिकम्स वेरी अनसर्टेन। समझ गए? और अगर हम मान लिया मोमेंटम को और वेलोसिटी को सर्टेन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि लो एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करे। अब वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, जो पोजीशन है और अनसर्टेन हो जाएगी ना। समझिए? इसलिए अगर 2 लैम्डा से बड़ा पार्टिकल है then there is no effect of uncertainty principle on it। इसलिए डेली लाइफ में it has no significance, it has no effect on our daily life because by our eyes we can see macroscopic particles or some semi micro, but microscopic particles we cannot see by naked eyes। ठीक है? so इसलिए Heisenberg uncertainty principle has significance only in case of, it is applicable to microscopic objects। डन? तो ये पार्ट हो गया अपना। छोटे शब्दों में हेजनबर्ग को एक्सप्लेन करना हो कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम इकट्ठे एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। बस इतना सा अगर लिख दोगे तो डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम of a microscopic particle simultaneously and accurately। that is the smallest words used। इससे कम यूज करोगे तो भैया वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा टीचर। ठीक है? ओके डन। ये समझ आ गया आपको? मैंने आपको भी बता दिया कि इम्पैक्ट्स ऑन आवर डेली लाइफ। अगर कोई पूछे what is the impact of Heisenberg uncertainty principle in our daily life, तो आप लिखोगे there is no impact of Heisenberg uncertainty principle in our daily life because in our daily life we come across macroscopic objects or semi microscopic objects। ठीक है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए it is impactful, okay, and then that cannot be seen by naked eyes, okay, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट? इसलिए इसका इम्पैक्ट डेली लाइफ पे नहीं है। क्लियर? नाउ विद रिगार्ड टू फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल के फेलियर में इसका क्या रोल था? उसने क्या बोला था बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर। पहली बात, इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर एंड इट मूव्स in well defined
circular paths. Well defined circular paths, जिनको क्या बोला था, called orbits. But according to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to have well defined path for the electron. So he replaced well defined paths with probable paths. So he defined the probable paths for electron. ठीक है, that's why Bohr's model is not extended to other atoms, because then it leads to wave mechanical model of atom. Quantum mechanical, it leads to the next atomic model, that is quantum mechanical model of atom, that we are going to discuss in the next session. Quantum mechanical model of atom. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो था वो फिर नेक्स्ट आया. बोर्स मॉडल फेल हो गया क्योंकि उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था. ठीक है, और उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एन एटम दे मूव्स इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स. ठीक है, जो कि एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम और वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड simultaneously and accurately according to Heisenberg, right? So that's why he replaced those well defined paths with probable paths. ना बोला कि there is probability of finding the electron rather than well defined paths. ठीक है, उसने बोला था orbits, इसमें concept दिया अगला orbital, वो next क्लास में करेंगे हम, है ना. समझ गए इतना? जो वेल डिफाइंड पाथ थे उनको उसने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके, नाउ इसका दूसरा जो सिग्निफिकेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन cannot exist in nucleus. अगर क्वेश्चन आए कि why electron cannot exist in nucleus, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन, अगर एक क्वेश्चन आए तो इसके लिए क्या लिखना है आपको. क्योंकि अगर लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन is inside nucleus. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इक्वल टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस. देन डेल्टा एक्स, that is uncertainty in position. Like I am in this room now and I am not going out, that means what is my uncertainty, कि कितना मैं अनसर्टेन हो सकता हूं, इक्वल टू साइज ऑफ द रूम. तो अब बोले कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस में कहीं होगा ना, किसी भी पोजीशन पे. ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू size of nucleus. And what is the size of nucleus? Is it visible? Yes. So size of nucleus होता है 10 raised to power minus 15 meter. So that means delta x
is 10 raised to power minus 15 मीटर. राइट, हमने सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड न्यूक्लियस, फिर हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल है. कैसे प्रूव करेंगे वो आगे देखो. तो यू नो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. दैट इम्प्लाइज डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m into delta x. So what is h? Planck's constant value you know 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, 4 and 3.14. What is the value of m? Mass of the electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. And what is delta x? 10 raised to power minus 15 meter. So if we solve it, value comes out to be 5.79 into 10 raised to power 10 meter per second. This value comes. इसका मतलब uncertainty in velocity is greater than the velocity of light. Because you know what is the velocity of light? It is 3 into 10 raised to power meter per second. ये होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि uncertainty in velocity is greater than the speed of light. If it is greater than speed of light, that is impossible because no particle can travel more than the speed of light. तो उसकी uncertainty उसकी velocity से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती. तो आप लिखोगे it is impossible for any particle to have uncertainty in velocity greater than the velocity of light. So it means electron cannot exist inside the nucleus, it is in the extranuclear part. That's why electron cannot exist inside the nucleus. It should be in the extranuclear part. Right? That's it. तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है. पहले सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना. फिर आपको क्या करना है कि उसके लिए डेल्टा वी फाइंड आउट करना है. डेल्टा वी अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस दैट पार्टिकल कैनॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. गॉट इट. सो वी हैव प्रूव्ड कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल that electron cannot exist inside the nucleus. Let's do one numerical on it. Okay. तो numerical करते हैं. Question is a gold
40 gram. And a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in its position. So this is the question. तो क्वेश्चन है अपने पास, अब गोल्फ बॉल है, इसका मास है 40 ग्राम एंड स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड. So see, mass is 40 gram. So in kilogram, what is the value? What is the value in kilogram? 40 or 1000 means 0.04 kg, and velocity is 45 meter per second. So what is uncertainty in velocity? Yes, uncertainty in velocity. So here velocity is 45 meter per second and it is measured with an accuracy of 2%. That means it is 2 by 100. So 0.9 meter per second. Mass we have, uncertainty velocity we have. So we have to calculate uncertainty in position. Now very easy. Only one point is there कि इसका क्या करना है कि speed जो है can be measured within an accuracy of 2%. That is the main thing. तो हमने वो 2% का फंडा यहाँ कर लिया. समझे? अब you know, according to Heisenberg uncertainty principle, delta x into delta v equal to h upon 4 pi m. So from here delta x is equal to h upon 4 pi m delta v. So h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. 4 into 3.14. Mass is 0.04 because SI unit में लेना है kg. Delta V is 0.9. Okay, it is in kg and it is meter per second. So by solving it, what is the value we get? We get 1.46 into 10 raised power minus 33 meter. So this is the answer. कैसे किया समझ आया? सबसे पहले हमने मास लिखा, that is 40 gram. We convert it into kg, that is 0.04 kg. Then velocity is 45 meter per second. Change in velocity, that is 45, 2% of 45. So it is 0.9 meter per second. Then according to Heisenberg's uncertainty principle, delta x into delta v h upon 4 pi m. So delta x is h upon 4 pi m delta v. So by putting the value we get the
today we will start next, that is quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom. Actually, in Bohr's model, electron is considered as a particle. That is the biggest limitation of Bohr's model, and he could not satisfactorily explain de Broglie equation, de Broglie hypothesis, and Heisenberg uncertainty principle. So then Erwin Schrödinger in 1926, name is एरविन श्रोडिंजर, उसने एक मॉडल दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर कंसीडर किया. इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज a wave as well as particle. मतलब ड्यूअल नेचर उसका कंसिडर किया. और क्या बोला उसने कि जो इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ था, बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड पाथ होता है, उसको उसने प्रोबेबल पाथ में चेंज कर दिया. उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता, देयर आर प्रोबेबल पाथ्स. ठीक है ना. और उसने एक इक्वेशन दी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन del square psi del x square del square psi del y square plus del square psi over del z square plus 8 pi square m over x square e minus v psi equal to 0. ये जो इक्वेशन है इस पे पूरा मॉडल डिपेंडेंट है. अब ये इक्वेशन सीम्स टू बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट. बट क्योंकि बुक में भी दी हुई है इक्वेशन, तो मैंने यहाँ लिख दी है ना. इसमें जो ये है साई, इसका स्पेलिंग होता है PSI, है ना, पर इसको पसाई नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साई. ठीक है. And this is called wave function. और इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया गया, 3 dimensional wave. 3 dimensional कि वो मूव करता है 3D में. ठीक है ना. और ये जो वेव फंक्शन है, इसकी it is actually atomic orbital. It represents क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल को. मतलब उसका पूरा जो इंफॉर्मेशन है पूरे सिस्टम की, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में होती है. It has positive as well as negative value. वही क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट मीन्स पॉजिटिव, ट्रफ मीन्स नेगेटिव. ठीक है ना. और it has physical significance. और कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. इट इज अ वेव फंक्शन कि वेव जो है किस तरह से ट्रेवल कर रही है ना, पार्टिकल किस तरह से ट्रेवल कर रहा है इन 3D, वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है. ये आपको कि साई जो है एक वेव फंक्शन है. इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल. ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum. दोबारा लिखता हूं मैं.
पहले तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। साई वेव फंक्शन है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें ये ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि साई डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड। साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, साई जो है इसको ऐसे लिखते हैं, साई एक्स वाई जेड, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो वो पूरा डिफरेंशियल नहीं होना, उसका क्या हुआ, पार्शियल। वैसे ही सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड, राइट। और इसके बाद ये जो m है, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h is Planck's constant, E is total energy, and V is total potential energy। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस करके क्या आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये जो साई है ये ही मेन चीज है। जिसको साई पता होगा उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। ठीक है, अब ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो बोलते हैं ना कि सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, वेरी डिफाइंड सर्कुलर पाथ, है ना, वो कंसेप्ट ही इसने खत्म कर दिया। ठीक है, और उसको किस में ले आया, वो प्रोबेबल पाथ। और ये साई है और क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल क्या चीज है, ऑर्बिटल इज 3-dimensional space around the nucleus देखो ऑर्बिट जो था ना वो 2D था, ऐसे सर्कल बनाते थे ना हम, सर्कल सर्कल, तो 2D मॉडल था वो एक्चुअली। पर यहां क्या है, 3D मॉडल, कि 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। कितनी, राउंड अबाउट 95%। तो उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो उसने ऑर्बिटल का कंसेप्ट लेके आया वो, ये नोट कर लिया। तो ऑर्बिटल समझिए आप लोग क्या होता है, एक ऐसा स्पेस 3 डायमेंशन में न्यूक्लियस के अराउंड वेयर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कितनी, राउंड अबाउट 95%, और 5% वो कहीं भी हो सकता है, वी कैनॉट डिफाइन इट। ठीक है, इन शार्ट बाउंड्रीज, बट एक प्रोबेबल बाउंड्री बना सकते हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है ना, तो वो जो प्रोबेबल रीजन है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था उसके जो हम लिखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंट consequences of quantum
mechanical मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट जो इसका कंसीक्वेंस है वो लिखो, वो है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। मुझे लगता है क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। इट कैन हैव, दैट इज इट कैन हैव certain स्पेसिफिक वैल्यू। देखो जैसे स्टेयर केस होता है ना, एक स्टेयर के बाद आप दूसरी स्टेयर पे पैर रख सकते हो, उसके बीच में हवा में पैर नहीं रख सकते। तो वो क्या हुआ, एक स्टेयर केस है क्वांटाइज्ड। जैसे आपने लैडर लिया तो लैडर का एक स्टेप होता है, फिर दूसरा, उसके बीच में कहीं पैर नहीं रख सकते आप, तो उसकी एक क्वांटाइज्ड सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज है ना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। बट अगर रोड पे चल रहे हो आप पैर कहीं भी रख लो तो दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। समझ गए ये बात, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, नाउ सेकेंड इज द क्वांटाइज्ड energy levels that can be obtained for the electron present in an atom quantized energy levels quantized energy level for the electron present in an atom are obtained from the solution of Schrödinger वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से वी गेट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, देयर आर नो डेफिनेट पाथ्स फॉर द इलेक्ट्रॉन, देयर आर ओनली प्रोबेबल पाथ्स, देयर आर ओनली प्रोबेबल पाथ्स। और वो जो प्रोबेबल पाथ्स हैं, ठीक है, that led to the origin of atomic orbital। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया किसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। एज पॉइंटेड बाय हेजनबर्ग, uncertainty principle both exact position and energy of an electron is not determined simultaneously with accuracy। ये था इसका पोस्टुलेट। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन
the path of the electron is only probable and not fixed as per quantum mechanical model of atom. जो path of the electron है is only probable and not fixed. This led to the concept of atomic orbital. ठीक है, तो उससे एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया. अप टू बोस मॉडल देयर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या था? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ऐसा माना गया है ना. बट बाद में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आया, उसने बताया कि देयर आर नो डेफिनेट पाथ्स, देयर आर ओनली प्रोबेबल पाथ, और वो अडॉप्ट किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ने. ठीक है, तो उसने डिस्कवर किया फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट. ठीक है, ओके. तो दिस इज थर्ड कॉन्सिक्वेंस. नाउ फोर्थ कॉन्सिक्वेंस था, the atomic orbital is represented by a wave function psi. मैंने अभी बताया था आपको, the atomic orbital is represented by the wave function psi. ठीक है, और लिखा है कि इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल वेव फंक्शन. सिंस a number of बहुत सारे नंबर में वेव फंक्शन पॉसिबल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग से लिखा है नंबर ऑफ सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन corresponding atomic orbitals are also possible, and for each orbital electron has definite energy and not more than 2 electrons. आएगा नीचे, not more than 2 electrons can accommodate. दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दो. तो बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं. एंड देयर आर नंबर ऑफ सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक का वेव फंक्शन होगा, है ना. तो हर वेव फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग जो है
उसका क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी तो डेफिनेट होती है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, नॉट मोर देन 2। डन, ओके। ये हो गया फोर्थ कॉन्सिक्वेंस। एक हो गया कि वेव फंक्शन जो है, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, हाँ ये है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is proportional to the square of wave function psi। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। दैट मींस साई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन उतनी हाई होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है। और इसमें लिखा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस साई स्क्वायर इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं दे आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अगर हमें कोई एटॉमिक ऑर्बिटल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, और फिर उसको ओरिजिन में डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे ज्यादा डॉट होंगे, है ना, उसको हम बोल देंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। बाहर तो यहाँ पे डॉट मैक्सिमम है, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यूज हमने निकाली बहुत सारी, है ना, और फिर वो उसको प्लॉट कर दिया, है ना। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम डॉट्स हैं साई स्क्वायर के, कि साई स्क्वायर के बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में। तो हमने साई स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज निकाली, और साई स्क्वायर की वैल्यू जो है उनको डॉट लगाते गए। तो देखा कि जो डॉट मैक्सिमम डॉट थे वो इस रीजन में थे, कुछ डॉट्स बाहर भी थे, बट दे आर वेरी लेस। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है दैट कैन नॉट बी डिनाइड इवन एट इंफिनिटी। हमारे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है, बट एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 95%, बट 5% इट कैन बी एनीवेयर, है ना। हम ये नहीं बता सकते कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, इट कैन बी समवेयर एल्स, है ना, बट क्योंकि प्रोबेबल रीजन जो है ना वो हमने दिया है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी पे आ गया, प्रोबेबिलिटी पे, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का दैट लेड टू 3 क्वांटम नंबर्स, दैट गिव अस 3 क्वांटम नंबर्स। अभी बात करते हैं क्वांटम नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब समझ लो कि ये टॉपिक इस तरफ और बाकी सारे कंसेप्ट एक तरफ। इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom। अगर हम ऐसे रॉ लैंग्वेज में बोलूं मैं तो इसका मतलब इट इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी का एड्रेस जो है गांधीनगर में हमें देखना हो तो पहले आएगा
गांधीनगर का मतलब फॉरेन से कोई आता है तो पहले तो इंडिया, स्टेट इंडिया, सॉरी कंट्री इंडिया, स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, और गांधीनगर में फिर आ जाएगा सेक्टर, ये सेक्टर नंबर। अब नंबर शुरू हो जाएंगे, सेक्टर नंबर, प्लॉट नंबर, है ना, या अगर फ्लैट है तो फ्लैट नंबर, राइट। तो वो नंबर है जो कि इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ gives us 3 quantum numbers. कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग प्रिंसिपल वाली है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं n। दूसरा एजीमुथल और सब्सिडियरी और एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको जो है डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं एम एल से। सो दीज आर द 3 क्वांटम नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और देयर इज अ फोर्थ इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको डिनोट करते हैं एस और एम एस, ये एम एल या एम, ये एस या एम एस, ठीक है, और ये एल और ये एन। तो ये है 4 क्वांटम नंबर्स, एन, एल, एम एल, एम एस या एस, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Principal quantum number, it is denoted by small n, and it tells us about shell number, n equal to 1, 2, 3, 4. तो n1 means K shell, 2 means L shell, M shell, N shell. तो ये एक तो बताता है शेल कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर 1 में है तो मतलब K शेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 means L shell, 3 means M shell, 4 means N shell, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, right? Then it gives the value of energy of electron in hydrogen atom or hydrogen like atoms। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले
वो n पे डिपेंड करते हैं ना सिर्फ, ठीक है, एनर्जी बताता है। और it also gives us an idea of distance of the electron from the nucleus, because as n increases, size of the shell increases, so distance from the nucleus of the electron increases. As n increases, size of the shell increases, and so is the distance of the electron from the nucleus. ठीक है, ये हुआ अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल, साइज, एनर्जी। लिख देता हूं एक बार फिर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल, उसका साइज, उसके एनर्जी, ये तीन चीजें, ठीक है। ओके, नाउ कम टू azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is denoted by L, and it represents subshell. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? सबशेल। क्लियर? एंड फॉर गिवन value of n, values of L are 0, 1, 2, so on up to n minus 1. 0 से लेके n minus 1 तक वैल्यूज होती है L की। फॉर एग्जाम्पल फॉर n L 0, 1, 2, 3, तो सबशेल जो होगा दैट इज S, स्मॉल s है, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, एंड स्मॉल g, स्मॉल h, एंड सो ऑन। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां ले जाना, ले जाओ। पर s p d f r में तो ये वो था KLMN, और कैपिटल में ये जो है स्मॉल में, and these are obtained from the spectroscopic terms, ठीक है। S for sharp, P for principal, D for diffused, F for fundamental. These are the spectroscopic terms, ठीक है, उनसे ये निकला है वर्ड्स। There is no need to remember it, ठीक है ना, बट ऐसे बता रहा हूं आपको, राइट। अच्छा, फॉर n इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 0 से n minus 1, n minus 1 मीन्स 1 minus 1 0, तो L की वैल्यू सिर्फ क्या होगी? 0। तो L1, N1, L0, L0 मीन्स S, तो शेल है 1 और सब शेल है S, तो उसको हम लिखते हैं 1S, ठीक है। n हो 2, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n? देखो 0 से लेके n minus 1 तक, ठीक है ना, तो 0 भी होगा और 1 तक, 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 और 1। तो सेकेंड शेल में देयर आर 2 सब शेल्स। फर्स्ट शेल में एक सब शेल दैट इज S, सेकेंड शेल में 2 सब शेल दैट इज 2S एंड 2P। थर्ड शेल में क्या हो जाएगा? 0, 1 एंड
2, मतलब 3 में 3 सबशेल, 3s, 3p एंड 3d। मुझे n इक्वल टू 4 का बताओ। 0, 1, 2 एंड 3s, 4p, 4d and 4f, right? And if n equal to 5, then values of L are 0, 1, 2, 3 and 4. Means 5s, 5p, 5d, 5f and 5g. तो इसका मतलब नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू शेल नंबर। फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स। ठीक है, तो एंड ये जो SPDF है, इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। तो ये जो है इट गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप दैट इज S जो है ना, उसकी शेप होती है स्फेरिकल। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे पूरी शेप्स, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं। P जो है उसकी शेप होती है डम्बल। D जो है उसकी होती है डबल डम्बल। और F की जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप होती है, दैट हैज नो कनेक्शन। कॉम्प्लेक्स शेप होती है, इसलिए उसको हम स्टडी नहीं करते। ये समझ गए इतना? ओके, अब हमने किया कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल इक्वल टू n। जो नंबर होगा फर्स्ट शेल में 1, सेकेंड शेल में 2, थर्ड शेल में 3, फोर्थ शेल में 4, फिफ्थ शेल में 5। ठीक है ना? ओके, तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल n आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बता दिया आपको, शेप बताता है और सब शेल को बताता है ना? और जो है इट गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। Orbital angular momentum is denoted by capital L and is equal to square root of small l into L plus 1 h upon 2 pi। ठीक है, सो अगर S सबशेल होगा S सबशेल, एक शेप ऑफ सबशेल ही लिखो है ना, ऑर्बिटल को बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उसमें S सबशेल अगर होगा तो L की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो कैपिटल L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। अगर P सबशेल होगा तो L क्या होगा? 1। तो व्हाट इज L वैल्यू? देखो 1 into 1 plus 1 means under root 2 into h upon 2 pi। अगर D सबशेल होगा तो L की वैल्यू 2, तो L वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 2 plus 1, 3 into 2 under root 6 into h upon 2 pi। वैसे ही 3 का होगा, कर लोगे? तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। Now next, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कैसे आता है? आपने वो पढ़ा था ना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट। और हमने लिखा था कि जीमन इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय
बोर, है ना। तो जीमन इफेक्ट यहां से समझ में आता है कि ये बोलता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर, इन अ मतलब अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। तो क्या होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हर वक्त चेंज होती रहती है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन when interact with magnetic field of the earth, then that electron has a specific orientation. क्या बोला मैंने कि when an electron is revolving around the nucleus, it is associated with magnetic field। ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वैसे आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज मूव करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट यहां क्या हो रहा है कि हर वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि वो ऐसे मूव करेगा ना, हर वक्त डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड interact with magnetic field of earth, then it has specific orientation. Electron has specific orientation, है ना। It means electron. Then electron has specific orientation. So magnetic quantum number gives us orientation, and it represent orbital. क्या represent करता है, orbital, और it gives specific orientation। ठीक है। और for given value of L, values of ml are minus L so on 0 to plus L, minus L to plus L। तो L हो 0 तो ml क्या हो जाएगा, 0। L हो 1 तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ml, बोलो। 1 होगा तो -1 0 प्लस 1, राइट। L 0 तो ml ओनली 0, L 1 तो ml इक्वल टू -1 0 प्लस 1, L इक्वल टू 2 सो ml इक्वल टू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, और L हो 3 तो ml वैल्यू -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 2। तो ये जो हैं दीज आर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब L0 में S सब्शन, तो ml की वैल्यू एक ही है, तो इसका मतलब S सब्शन में एक ऑर्बिटल, P सब्शन कितने, 3 ऑर्बिटल, D सब्शन में कितने हैं, 5, और F सब्शन में 7। यहां लिख देता हूं एक बार कि L0 मीन्स S सब शेल में
यहाँ लिखता हूं सब शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सब शेल डिनोट करते हैं एल। एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट की थी? 0 1 2 3, ठीक है। कौन सा सब शेल? एस, एस सब शेल, टी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल, ठीक है ना। तो एल 0 होगा, ये टी डी और एफ। तो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। पी सब शेल में 3, डी सब शेल में 5, एफ सब शेल में 7, 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलेगा, ठीक है। सो इसका जो नंबर होता है दैट इज 2l + 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सब शेल इक्वल टू 2l + 1, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीन जो थे दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है स्पिन्स along the axis either clockwise means plus half and anti-clockwise that is minus half। कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो दो ओरिएंटेशन होगी उसकी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, स्पिन सॉरी, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और एन ऑर्बिटल वो भी किया था, कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin, ठीक है। An orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज प्लस हाफ को अप स्पिन ऐसे बनाते हैं और माइनस हाफ को ऐसे, मतलब ऐसे अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अप है तो दूसरा स्पिन क्या होगा? डाउन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये हैं 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इनको एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। ओके, समरी लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं एन, इसको डिनोट करते हैं एल, इसको एम एल,
और इसको सिंपली ms या s या ms, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया कि डिनोट किससे करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, हाँ, डिस्कवरर, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था सिंपल बोर ने, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड, इट इज डिस्कवर्ड बाय लिंडे, और स्पिन क्वांटम नंबर बाय गॉडस्मिथ, ठीक है। तो ये हो गए इनके डिस्कवर के नाम। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन। ओके, अब शेल जो है, और ये क्या बताता है, ये साइज, ये क्या बताता है, शेप, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन ही बताता है, ठीक है ना। ओके, देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth shell is equal to 2n square, कितने होते हैं, 2n square, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in nth shell that is equal to n square, ठीक है। और सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth shell is equal to 2 times 2l plus 1, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in nth subshell, sorry, that is equal to 2l plus 1, ठीक है। ये इसने बताया कि ऑर्बिटल्स n शेल में n स्क्वायर, ऑर्बिटल्स इन nth सब शेल that is 2l plus 1, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ, हाँ इसमें और भी आएगा कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल। तो इसने बताया शेल और उसका साइज, सब शेल, शेप, ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बताता है, ठीक है ना। और यहां पे और क्या बताया था, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वैल्यू थी अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो ये जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ऑफ द, किसका डिस्क्रिप्शन है, क्वांटम नंबर्स का, ठीक है। ये पूरा एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, शेल के किस सब शेल में है, सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में उसकी स्पिन क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, मतलब मैक्सिमम है ना, ये भी सब मैक्सिमम मैक्सिमम ही है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स, ये सब मैक्सिमम में चल रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उनकी स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। और इसमें लिखना हो, आपने ऐड करना हो तो क्या ऐड कर सकते हो कि n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 हो तो इट इज k l m n, राइट। शेल, फिर l की वैल्यू 0 1 2 3 हो तो s p d f, ठीक है, ये भी आ गया। और तो n की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 और फॉर गिवन n वैल्यूज ऑफ l क्या है, वैल्यूज ऑफ l आर 0 1 2 so on up to n minus 1, और for given l values of ml are minus l so on 0 to plus l, माइनस l से लेके प्लस l तक। और for given ml values of ms are plus half and minus half, that's it। तो पूरा क्वांटम नंबर्स मैंने दूसरी बार आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना है आपको, राइट। और फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So our today's topic, first topic is the difference between orbit and orbital. So you know orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which electron revolves. That is in accordance with Bohr's model, right? And orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, right? Means around 95%. This is probable region and this is well defined path. So it is planar, always circular, but it is three-dimensional space and it has different shapes except s orbital जो है that is spherical, आज हम करेंगे shapes। p orbital dumbbell, d orbital double dumbbell and f has a complex shape, okay। And maximum electron that an orbit can accommodate is 2n square. First shell has 2, second shell, see 2 to the 4 to the 8, and third shell 2 to the 2 into 3 raised to power 2 means 18 electrons. Likewise, okay. And in an orbital there are always 2 electrons. Maximum electrons that an orbital can accommodate are 2. In this case Heisenberg uncertainty principle is not applicable. ये बोलता है कि position and momentum or velocity can be measured with certainty, but here Heisenberg uncertainty principle is applicable, and according to this position and momentum of a particle cannot be measured with absolute accuracy and simultaneously, right? These are the basic difference between an orbit and an orbital. So you can say an orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which the electron revolves, but an orbital represents the region in space around the nucleus of the atom where the probability of finding the electron is maximum, that is around
90 to 95%, right? Second is it represents the movement of the electron around the nucleus in a plane. This is planar motion, but here it represents 3D movement of the electron. Third, in an orbit, position as well as momentum of the electron can be known with certainty. But here in an orbital, the position and the momentum of the electron cannot be known with certainty. Means this is Heisenberg uncertainty principle. Okay. Fourth, all orbits are circular, but orbitals have different shapes. S orbital spherical, P orbital dumbbell, D orbital double dumbbell, and F has complex shape. Okay. Orbits do not have directional character. That's why it cannot determine the shape of the molecule. उसने तो बोला कि सारे क्या होते हैं सर्कुलर, बट यहाँ पे सिर्फ s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, बाकी जो है all others have directional characters and that's why they can determine the shape of the molecule. Okay. The maximum number of electrons which can be accommodated in an orbit is 2n square. As I said, an orbital can accommodate maximum of 2 electrons. So these are the differences between orbit and orbital. Very important question. अब तीन प्रिंसिपल हम लिखेंगे अभी. फर्स्ट इज अफबो प्रिंसिपल. ये जो है ना अफबो, इट इज अ जर्मन वर्ड which means building up. ठीक है. So according to this क्या था कि electrons are filled in various orbitals in the order of increasing energies. जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे. पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, ऐसे. तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. तीन प्रिंसिपल है ये, इनमें से आता ही आता है क्वेश्चन. ठीक है. तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in various energy levels according to their energies starting from lowest energy level. Starting from lowest energy level. तो लोएस्ट एनर्जी लेवल पहले फिल होगा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, ऐसे. ठीक है. अब किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वी टू डिटरमिन एनर्जी वी यूज n plus l रूल. n plus l रूल क्या है? फर्स्ट, if n plus l value is higher, that subshell has higher energy. जिसकी हायर n plus l वैल्यू हायर एनर्जी, एंड इफ n plus l वैल्यू is same, then the one which has higher n value has higher
ऐसे फाइंड आउट करने if n plus l value is higher, that orbital or subshell has higher energy, and if n plus l values are same, then the one which has higher n value has higher energy. दिख रहा है ना? ओके, तो देखो अब let us consider different orbitals. Like if we have 1s and 2s, see for 1s n is 1, l is, you know, s के लिए l is 0, for at 2s n is 2, l is 0, means it has n plus l value 1 and it has n plus l value 2. So 2s has higher energy than 1s. 2s has higher energy than 1s, right? Now tell me, if we have 2p and 3s, now tell me what is the value of n and l for 2p. For 2p, n is 2 and l is, you know, for s, p, d, f, l values are 0, 1, 2, 3. Right? These are subshells, s, p, d, f, and values of l. Okay, very good. L is 1. So what is the n plus l value? 3. For 3s, n is 3 and l is 0. So again n plus l value is 3. Now both have, say in this case, n plus l value of 2s is more than 1s. That's why we say 2s has higher energy than 1s. But in this case, both have same value of n plus l. Then which one has a higher energy? If n plus l value is same, then rule number 2 of n plus l. If are same, then higher n value, higher energy. Okay, so that means 3s has higher energy than 2p. Because their n plus l value are same, but 3s has higher n value, right? That's it. Got it? Okay, now next question for you, that is very important and came in many exams, maybe this year. Out of 3D and 4s, which one has higher energy? And why? Yes, out of 3D and 4s, which one has higher energy and why? Say, write 3D and 4s. In 3D, n is 3, n is the number before the subshell. Here n is 4. L values for D is 2, L value of S is 0. So n plus L value here is equal to 5 and n plus L value for 4. So, you know, as 3D has higher n plus L value than 4s,
So energy of three D is higher than that of 4s. So which one is filled first? Tell me. Out of 3D and 4s, which one is filled first? Electron goes in which orbital first? So as 4s has lower energy, so 4s is filled first and then 3D. Okay, got it? Now see, for every orbital we have to write n plus l. So to get rid of this part, we will write the order and I will make you learn it by a simple technique. That is a trick. It's my trick. Okay, patent trick. Okay, it is S S P S BPS BPS FDPS FDPS. Now you know see S P D and F. For S, L is 0, P, L is 1, for D, L is 2, for F, L is 3. Right? 0, 1, 2, 3. These are the L values. Yes, you can see it. Right. So, you know, L values are 0, 1, 2, 3. So what is the minimum N value? Minimum N value. Minimum N value for S is 1. It starts from 1, but P starts from 2. D starts from 3. F starts from 4. Got it? Because it is L is 0, so minimum value is 1. For P, L is 1, so it starts from 2. For D, L is 2, it starts from 3. For F, L is 3, it starts from 4. Right? So S starts from 1. And याद कैसे रखना देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, sorry, 2 times public school. I'm sorry. See, school school, public school, public school, Delhi public school, Delhi public school, friendly Delhi public school, friendly Delhi public school. Okay, so S starts from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, P starts from 2, so 2, 3, 4, 5, 6,
7. Okay, D starts from 3, so 3, 4, 5, 6. F starts from 4, so 4 and 5. So this is the order of energy, order of increasing energy. 1s has lower energy than 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p and 8s. This is the order of increasing energies. सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s. तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, फिर 3d, 4p, ऐसे. ठीक है ना? अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में कितने आ सकते हैं? देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s. तो क्या रिलेशन था? 2 into 2l plus 1, right? So that implies it is 2 into 0 plus 1. That means it has 2. Maximum electron that s can accommodate is 2. 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है ना? p में बोलो 2 into 2l plus 1 means 2 into 1 plus 1 means 2 plus 1, 3 into 2, 6. So p सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6. तो मुझे d और f का बताओ. How many electrons are accommodated in d and f? तो d में 10, क्योंकि it is 2 into 2 plus 1, that is 5 into 2 means 10. For f it is 2 into 3 plus 1 means 14. So देखो, maximum number of electron that s can accommodate is 2 and maximum number of electrons that p can accommodate is 6. Maximum number of electrons that d can accommodate is 10 and maximum number of electrons that f can accommodate is 14. Right? So maximum number of orbitals कितने होंगे? Orbitals maximum number of orbitals, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2. और रिलेशन क्या होता है? 2l plus 1. So s में कितने होंगे? 1, 3, 5, 7. We have done it before, right? So maximum number of orbitals are 1 in s subshell, p subshell में 3, d subshell में 5, f subshell में 7. ठीक है? ओके, तो ये कंसेप्ट ये याद हो जाएगा. स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल. एक मेरे दोस्त ने बताया था ऐसा भी कर सकते हैं. शर्मा, प्रसाद शर्मा, देवी प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ देवी प्रसाद शर्मा. ये एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ऐसे भी याद कर सकते हैं. एनी हाउ यू कैन मेक अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर. ठीक है? अदरवाइज आई हैव गिवन यू 2 ट्रिक्स. या तो स्कूल करके करो या फिर शर्मा करके करो. ठीक है? और s starts from 1, ये याद रखना पड़ेगा. p starts from 2, d starts from 3, f starts from 4. देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 1s ऐसे से भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 4s तक जो है ना वो मैं आपको फिल करके बताता हूँ. That is called electronic configuration. अब आपको ये पता चल गया कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 और d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14. ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया.
अब आपको पता है कि यहाँ मैं Z लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे सिंबल लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखनी है आपको, वो भूल जाओ जो लिखते थे ना 2 8 8, ठीक है, वो 10th तक ही काम करती है। अब आपको जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे अगर कोई पूछे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो डोंट राइट नाउ 2 8 8, ठीक है ना। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वैसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। तो एक एटॉमिक नंबर है, सिंबल हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लोएस्ट, सो इट इज 1s1, राइट। नाउ एटॉमिक नंबर 2 is of helium, so we start 1s2। ये 1s जो है वो सब शेल है, फर्स्ट शेल का s सब शेल है ना, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 2 तो हमने कर दिए। ये क्या हो गई नोबल गैस, हीलियम इज अ नोबल गैस। तो जो नेक्स्ट लिखेंगे हम से 3, दैट इज लिथियम, तो ये तो फिल हो गया पूरा। तो इसको हम अब 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो आप लिखोगे 1s2, 1s3 नहीं हो सकता, मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट s कैन अकोमोडेट आर 2, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में, तो इट बिकम्स 2s1। फिर 4 पे जाओगे तो इट इज बेरिलियम, इट इज 1s2 2s2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हीलियम 2s1। क्यों? क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, तो नोबल गैस जो है फुल्ली फिल्ड होता है, उसका उससे पीछे जितने भी शेल होंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो बेटर टू राइट लाइक दिस, क्योंकि कहां तक लिखते रहोगे, जैसे ही नोबल गैस आएगी तो स्क्वायर ब्रैकेट में राइट द सिंबल ऑफ द नोबल गैस एंड देन नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब 1s के लिए हीलियम लिखना, ठीक है ना। 5th बोरोन, बताओ अब क्या होगा, इट इज राइट, देखो 1s2 2s2 and 2p1, or we can write it as helium 2s2 and 2p1। सब लिखो, कार्बन का लिखो, नाइट्रोजन का लिखो, ऑक्सीजन का लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। और फिर just write down, ऑक्सीजन के बाद 9 is फ्लोरीन, 10 is नियो। Yes, write down fast. Good. Only 2 students are giving answer. Why? What about others? 8 students are watching. So I want answer from all of you. Just write down. Okay. You can count, see, boron में 5 electrons, so 2 plus 2 plus 1. ठीक है ना? For carbon, it is 1s2, 2s2 and 2p2, or helium 2s2 2p2. For nitrogen, now I skip this one, helium 2s2 and 2p3, and oxygen helium
2s2, 2p4. And what about fluorine? It is helium, 2s2 and 2p5, and neon, so it is helium, 2s2, 2p6, right? Sorry. Now neon is next noble gas. Now write for sodium. See, we filled 1s, we filled 2s, we filled 2p. Now neon 3s 1. And what about magnesium? It is neon 3s 2. Aluminium neon 3s2 3p1, because S की कैपेसिटी खत्म हो गई. Then 14 silicon, it is neon 3s2 and 3p2. 15 phosphorus, it is neon 3s2 and 3p3. ठीक है. फॉस्फोरस के बाद सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 argon, and 19 potassium, and 20 कैल्शियम. चलो जितने लिखे जाते हैं उतने लिख देते हैं. 21 स्कैंडियम and 22 टाइटेनियम. ओके, इतना लिखते हैं. चलो सल्फर इज neon 3s2 3p4, neon 3s2 3p5, आर्गन क्या होगा 3s2 3p6, and potassium, you know, argon is again noble gas. So now what about potassium? बहुत बढ़िया. 3p भी कंप्लीट कर दिया हमने. Now and after that there is 3d, that you know. Okay, so it is neon 3s, sorry because next noble gas. So argon 4s1, and calcium is argon 4s2, and scandium argon 4s2 3d1, and titanium it is argon 4s2 3d2. राइट. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद अफबो प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स, in various energy shells in the order of increasing energies starting from
lowest energy level, or lowest energy level is filled first and then we proceed to the next level, okay, according to their energies. Hund's rule. This is also called a rule of maximum multiplicity. बहुत बार टीचर ऐसे पूछ लेते हैं कि वाई इट इज नोन एज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो याद रखना कि जो मल्टीप्लिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 2s प्लस 1. ये जो s है दैट इज टोटल स्पिन. दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसकी मैक्सिमम स्पिन होनी चाहिए. डेफिनेशन है नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस in an orbital the orbital of a subshell until each orbital of same subshell is singly occupied. बोलने का मतलब ये है कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी. मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अच्छा, टोटल स्पिन देखो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि टोटल स्पिन क्या होनी चाहिए मैक्सिमम. और स्पिन टोटल मैक्सिमम कब हो सकती है when it has maximum number of unpaired electrons. So ये ना देखो, until each orbital is occupied by one electron, है ना, singly occupied with parallel spin. तो लिखा है no electron pairing takes place in the orbital of a subshell until each orbital of same subshell is singly occupied with one occupied by one electron with parallel spin. Parallel spin means एक ही साइड स्पिन होनी चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अपने पास p सबशेल है. p में आपको पता है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3. तो 3 बॉक्स बना लिए हमने. ठीक है, अब ये बोलता है कि पहले मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है p में, तो ऐसे आएगा. 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नहीं आएगा, वो अगले में आएगा और पैरेलल स्पिन होगी. ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर आएगा. पहले ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया. अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयरिंग करेगा और अब उसकी स्पिन क्या होगी अपोजिट. वो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कल किया था हमने, वो अभी दोबारा कर लेते हैं. ये तब ऐसा होगा. मुझे लग रहा है समझ में आ गया आपको, है ना. दूसरा रूल लिख देते हैं, फिर मैं इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखवाता हूं, है ना. तो दूसरा है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स
in an atom can have same value of all the four क्वांटम नंबर्स। मतलब हर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में यूनिक है, उसका शेल सेम हो सकता है, उसका सब शेल सेम हो सकता है, उसका ऑर्बिटल भी सेम हो सकता है, बट देन उसकी स्पिन सेम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बोलता है कि एंड इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट maximum of 2 electrons with opposite spin। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, तो अब हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये 3 जो रूल बताया है, ऑफबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए रूल है। ठीक है, तो मैं अब फिल करना शुरू करता हूं अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, electronic configuration is 1s1, so there is only one। इसको देखो, आप ये जो मैं बना रहा हूं ना, उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो या सिंपली ऐसे, एक ही बात है। ठीक है ना, तो अभी मैं एक ही साइड बनाता हूं, ये। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये 1s और हाइड्रोजन हो गया। 2 क्या है, हीलियम, और उसका होता है 1s2, और उसमें भी एक ऑर्बिटल। बट अब क्या होगा, अब कौन सा रूल लगाइए, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। पहले सिंगली ऑक्युपाइड हो गया, अब पेयरिंग स्टार्ट हुई, तो पेयरिंग से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दैट शुड हैव अपोजिट स्पिन। इसका प्लस हाफ तो इसका माइनस हाफ। इसका टोटल एस वैल्यू कितना होगा, 1/2। इसका टोटल एस वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि इसका प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, तो टोटल एस कितना हो गया, 0 हो गया ना। समझे। थर्ड, हीलियम के बाद लिथियम, 1s2 2s1, तो ये क्या हो जाएगा, 1s और 2s में एक। फिर 4 में बेरिलियम, बेरिलियम में 1s2 2s2 2p1। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो 2s, ओके 2s2 है ना, तो ये 2s2 है ना, नो नीड टू राइट दिस 1s। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं बोरोन। बोरोन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, सो 2s 2 और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल में, 2p सब शेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वैसे ही कार्बन में 1s2 2s2 2p2, तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो अलग शेल में जाएगा, अलग ऑर्बिटल में जाएगा, सॉरी, जिसका पैरेलल स्पिन होगी। ठीक है, तो इसकी स्पिन कितनी है, प्लस हाफ। इसकी टोटल स्पिन कितनी है, 0। इसकी टोटल स्पिन कितनी है, प्लस हाफ। इसकी टोटल स्पिन कितनी होगी, 1। होगी कैसे, इसका प्लस हाफ माइनस हाफ तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ तो 1 हो गया ना। और कार्बन जो है उसके बाद नाइट्रोजन
नाइट्रोजन जो है उसमें क्या होगा 1s2 2s2 2 पे 3, तो 2s2 और 2p3। तो देखो अब जैसे ही ये आया तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, ये देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि टोटल स्पिन इज नाउ 3/2 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है ना। तो टोटल स्पिन निकालोगे 2s + 1 करके। और अब जब ऑक्सीजन आएगा तो अब ऑक्सीजन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हर एक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फर्स्ट रूल लगा कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हर ऑर्बिटल सेम सब शेल का एक सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होगा विद पैरेलल स्पिन। अब जैसे होगा, पहले देखो मैक्सिमम स्पिन हुई, उसके बाद अब फिर ये कितना जाएगा +1, राइट। लिख लोगे बाकी। तो ऐसे ही आप 20 तक लिखोगे कि हमने 20 तक तो कर दिए थे कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आपने भी लिख दी थी। अब देखो 21 जो है वो क्या होता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम जो है दैट इज आर्गन 4s2 and 3d1। 22 it is titanium, that is argon 4s2 3d2। just write down the electronic configuration of 3d series, जिसमें 3d शेल सब शेल जो है फिल होता है उसको बोलते हैं 3d सीरीज, ठीक है ना। फिर 23 it is vanadium, so it is argon 4s2 3d3, right। so 24 it is expected to be argon 4s2 3d4, but actually surprisingly it is exceptional, it becomes 4s1 3d5। क्यों होता है ये, that I will let you know after some time, ठीक है। 25 मैग्नीज, it is argon 4s2 3d5। 26 iron, it is 4 argon 4s2 3d6। 27 cobalt, it is argon 4s2 3d7। 28 is nickel, it is argon 4s2 3d8। 29 is copper, it is argon 4s1 3d10। as per configuration it should be 4s2 3d9, but it is 4s1 and 3d10। 30 it is zinc, it is argon 4s2 3d10। so देखो these are exceptional electronic configuration। this is also exceptional electronic configuration। so because of this exceptional electronic configuration, this is 4s1 3d5 4s1 3d10। ये दो क्रोमियम और कॉपर, ये एक्सेप्शन क्यों है, अपने 11th में आप 30 तक लर्न करोगे, इट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। तो बट ये जो दो है ये एक्सेप्शन क्यों है ये हम करेंगे अभी। कॉन्फ़िगरेशन बाकी समझ में आ गई, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल वंस
एक्सेप्शनल जो होते हैं उन्हीं को लोग याद रखते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर को याद करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो वैसे कायदे से क्या होना चाहिए, 4s2 3d4, और ये कैसा होना चाहिए 4s2 3d9, 4s2 3d4, और ये होना चाहिए 4s2 3d9, बट इंस्टेड ऑफ दिस it is 4s1 3d5, it is 4s1 3d10. So why is it so, that we will discuss now. Okay, तो पहला क्वेश्चन है कि why chromium and copper has exceptional electronic configuration. तो first reason is exactly half filled and fully filled electronic configurations have extra stability. Exactly half filled and fully filled electronic configurations have extra stability. Exactly half filled D की बात करें तो D5 is exactly half filled and D10 is fully filled. क्योंकि D जो है ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, तो उसका एग्जैक्ट हाफ कितना हुआ 5, तो D5 और D10 जो है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अगर इसके आगे भी Y लगा दें, Y, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना, बट अगर दोनों में Y लग जाए, क्यों ऐसा कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है, तो उसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले ये लिखोगे, फिर अगर ये आता है तो यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और अगर यही क्वेश्चन होता है तो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होती है, इट इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है वो, सिमेट्री एंड exchange energy. These are two factors which decide the extra stability of D5 and D10. So let us discuss that. तो फर्स्ट फैक्टर बात करते हैं सिमेट्री। Symmetry leads to stability. Visible? Yes. So symmetry leads to stability. So let us compare D4. See, in D4, you know, D subshell has 5 orbitals. So just use Hund's rule. क्या बोलता है Hund's rule? कि electron pairing does not take place until each orbital is singly occupied.
of the same subshell. So see in D4, see 1, 2, 3, 4. One orbital is vacant. 4 has one electron with parallel spin and 1 is empty. But D5, all the orbitals have one electron each with parallel spin. So same is the case with D9 and D10. D9, D10. D9, 1, 2, 3, 4, 5. Each orbital is singly filled with parallel spin. Now pairing takes place. 9, but here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So out of D5 and D4, which has symmetrical distribution of electrons? D5 has D5 and D10. या लिखते हैं D5 has more symmetrical distribution of electrons than that of D4, right? Same, D10 has more symmetrical distribution of electrons than that of D9, right? So that means D5 and D10 are more symmetrical, so they are more stable. So first reason is because D5 and D10 are more symmetrical, therefore more stable. So first reason is that. Okay, why it is not D4 but it is D5? Why one electron shift from 4s to 3d? Same here, D9 is less symmetrical, D10 is more symmetrical, because all have two electrons. But here 4 orbitals have two electrons, one electron has one orbital has only single electron. So this is more symmetrical than this is more symmetrical than D4. Done? So symmetry leads to stability. Now second reason. Second is exchange energy. Now say D4, D5. D5 and D4. So what about exchange energy? Actually, electrons with same spin can exchange their positions. Electrons with same spin, with parallel spin, up spin can exchange their position. Electrons with same spin can exchange their positions, and for
exchange, energy is released. That is called exchange energy. क्या बोलते हैं उसको? Exchange energy. So more are the number of exchanges more is the exchange energy and greater is the stability of electronic arrangement. समझिए कि इलेक्ट्रॉन जिनकी पैरेलल स्पिन होती है दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन. इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये. जैसे चार लोग चेयर पे बैठे हैं, एक चेयर दूसरी चेयर दूसरा इस चेयर पे आ जाएगा, वो उस चेयर पे चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज. और जैसे वो एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है. अब जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. जितनी हायर एनर्जी होती है उतनी कम स्टेबल होती है कॉन्फ़िगरेशन. याद रखना है. जैसे इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी का हो जाएगा, उतना मोर एनर्जेटिक हो जाएगा, है ना. लेस स्टेबल हो जाएगा, जल्दी निकालना उसको इजी हो जाएगा ना उसको. समझ गए? सेम इज द केस हियर कि जिसकी एक्सचेंज एनर्जी, जिसके एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी. रिपीट करता हूं. ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन क्या हो? पैरेलल, सेम स्पिन, अप स्पिन अप स्पिन, ये एक दूसरे से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. और ये जो एक्सचेंजेस होते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है. तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो उससे क्या आती है? स्टेबिलिटी. एनर्जी कम हो जाएगी उसकी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी. अब मैं बताता हूं कैसे. देखो इसमें, देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी एक्सचेंज कर सकता है. मतलब तीन हुए पहले केस में. दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी कर सकता है. तो दो हुए, क्योंकि इसके साथ इसका तो एक्सचेंज काउंट हो गया. थर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस वन. ये ऐसे आएगा ना. अलग से बनाओ चार बार. देखो ये 1 2 3 4. ठीक है. One, two, three, four. 1 2 3 4. चार इलेक्ट्रॉन है ना. देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद अदर 3. तो तीन हो गए इसके. सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए दो एक्सचेंजेस और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सचेंज. तो 3 + 2 + 1 6 एक्सचेंजेस हुए. बट 5 के लिए क्या होगा? ठीक है. तो देखो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. D5 है. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद 4.
राइट, यहां लिख देता हूं, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज विद 3, थर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज विद 2, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज विद 1, मींस इट हैज 10 एक्सचेंजेस। सो किसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी? D5 की। D5 हैज 10 exchanges, D4 has 6 exchanges. That's why exchange energy of D5 is more than D4. So D5 is more stable than D4. So D5 has more number of exchanges than D4. That's why D5 has more exchange energy than D4. Let us try for D9 and D10. See, I am not writing for that, but see, D5 के लिए कितने exchanges थे? 10. D4 के लिए 6. ओके, तो देखो D9 जो है, could you figure out how many exchanges D9 has? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D10 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D9 has how many exchanges? Could you figure out? Yes, anybody? Very good. 60 number. Wow, great, Siddharth. Say, in D9 there are 5 with parallel spin and 5 electrons with parallel spin, 4 electrons with anti-parallel spin. So 5 electrons with parallel spin can exchange with each other. So they have 10 exchanges. 4 electrons with anti-parallel spin can exchange with each other. So they have 6, to total 16. Means D9 has 16 exchanges. But what about D10? D10 has 5 electrons with parallel spin, 5 electrons with anti-parallel. So total 20 exchanges for D10. For D9 16, for D10 20. So D10 has more number of exchanges, higher exchange energy. So D10 is more stable than D9. D10 is more stable than D9. That's it. Got it? So that's why D10 and D9, out of these, D10 is more stable. Out of D5 and D4, D5 is more stable and they have extra stability because of higher symmetry, and higher exchange energy. That's why exactly half filled and fully filled configurations have extra stability, and that's the case of chromium and copper. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है. नाउ let us take example of ions. Electronic configuration of ions. So for cations, electron is removed from, keep in mind, from higher shell number
shell number. Keep in mind this thing. From higher shell number, you know this is NLX. N is shell number, L is subshell, and X is number of electrons. This is SPDF. This is 1, 2, 3 shell number, X number of electrons. So higher N, electron is always removed from higher shell. Okay. So I will write configuration of iron. Iron is atomic number 26 and it is argon 4s2 3d6. So tell me what is the electronic configuration of Fe2 plus and Fe3 plus. Okay, write down the configuration. Just now I told you that when electron is removed, it is always removed from higher shell number. तो देखो ये 3D है, don't confuse it कि आप ऐसा लिख दो कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं क्योंकि 2 प्लस है तो इसको आप 3D 4 कर दो, रॉन्ग हो जाएगा आपका. ठीक है? क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हायर शेल नंबर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से निकल जाएगा तो इट बिकम्स 3d6 और इसमें से 3 निकालने हैं, 2 तो s से निकल गए तो 1 कहां से निकलेगा? 3d से, तो इट बिकम 4s, ये 3d5 और ये 3d, ये Fe2 plus 3d6, Fe3 plus 3d5. So now tell me, out of Fe3 plus and Fe2 plus, which one is more stable? Fe3 plus is more stable. Fe3 plus is more stable than that of Fe2 plus because Fe3 plus has exactly half filled D subshell. Very nice. Okay, great. Now tell me what is the electronic configuration of Cl negative. Cl की मैं लिख देता हूं. Cl Z is 17. It is neon 3s2 3d5. So what about Cl negative? Sorry, Z remains same. Z is 17 only, but Cl negative, 1 electron is added. So what is the electronic configuration of Cl negative? Great. So it is neon 3s2 and 3p6. 3s2 3p6 because 1 electron is added in the last shell. Right? So in this way we can write the electronic configuration. Done? Okay. So one more, just write for chromium 3 plus. Chromium is Z24. It is argon 4s1 3d5. So what is the electronic configuration of chromium 3 plus? Argon remains as such. 1 electron is removed from 4s and 2 more electrons are removed from 3d. So it becomes 3d3. Right? Okay.
Okay, very nice effort, good. तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। बस वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है 4s और 3d में कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, 4s में से, हायर शेल नंबर से, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं शेप्स, मच अवेटेड टॉपिक, शेप्स ऑफ s, p and d orbitals, subshells and orbitals. So start with s. S subshell. So for s subshell, L is 0 and M is also 0, means there is only one orientation. That means all directions are equivalent. M0 means same value, so all directions are equivalent. Means L0 indicates S is spherical. S subshell is spherical in shape. Means for 1s, this is nucleus. Electron density is maximum near s, near the nucleus, and then it goes on decreasing. For 2s, there is one nucleus, inside there is one shell and there is another. There are two spheres, one sphere and then next sphere, and there is a gap in between. This gap is void of electrons, there is no electron, and that is called spherical node or radial node. Spherical node or radial node. Node means the point or the place, the plane where the probability of finding the electron is nil. This is the spherical surface where the probability of finding the electron is 0. So that is called spherical node or radial node. So there is one radial node. For 3s, how many radial nodes are there? Tell me. For 1s, there is only one spherical surface. For 2s, there are two such surfaces. For 3s, yes, anybody? For 3s, 1s, 2s. For 3s, it is like 1, 2 and 3. One surface, second surface and third surface. So in between these surfaces there are two nodes, two spherical nodes, or we can say two radial nodes, two spherical nodes or two radial nodes, right? And what are radial nodes? Formula is radial nodes is equal to, or spherical nodes, it is n minus l minus 1. This is the formula to calculate radial nodes. So you know 1s, for 1s n is 1, l is 0. So 1 minus 0 minus 1 means for s it is like n minus 1 only, because l is 0. So for 2s, n is 2, l is 0. For 3s, n is 3, l is 0. Got it?
मैंने आपको बताया था क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, याद है? क्वांटाइज्ड स्टेट्स, एक स्टेट उसके बाद दूसरा स्टेट, सीढ़ियों का बात की थी, सीढ़ियों की, स्टेयरकेस की, कि एक बार पैर रख दिया तो दूसरे पैर जो है दूसरे स्टेयर पर रख सकते हैं, बीच में हम पैर नहीं रख सकते, वो ये सीढ़ियां हैं। इट इंडिकेट्स क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये क्वांटम लेवल की बात है, मैथमेटिक्स एक्चुअली। ये जो बना है ना, दिस इज द प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर। यहां से ऐसे रखो, फिर साई स्क्वायर को प्लॉट करो 3D में। ये 3 एक्सिस होगी ना, मान लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर उनको प्लॉट किया है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ गई यहां पे, फिर साई स्क्वायर की वैल्यू, फिर साई स्क्वायर की वैल्यू 0, इतने गैप में देयर इज नो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, क्योंकि साई डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड, लिखा था साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। फिर साई स्क्वायर की वैल्यू यहां आई 0, फिर साई स्क्वायर की वैल्यू वापस आई, और वो प्लॉट की हमने, क्या है, वैल्यूज ऑफ साई स्क्वायर। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मतलब साई की वैल्यू है ये, है ना, तो अगर मैं इसको 1s और 2s को जो ग्राफ दिए हुए बुक में वो प्लॉट करूं, तो देखो 1s जो है वो है लाइक दिस, maximum electron density near the nucleus, then it decreases, then it is almost very less. Okay, so if we plot the graph of psi versus r, so value of psi is maximum near the nucleus. This is the nucleus, this is the distance from the nucleus. As distance from the nucleus increases, value of psi decreases. साई की वैल्यू डिक्रीज कर दी, इट नेवर टचेस 0, बट ऐसा ग्राफ आएगा। तो ऑब्वियसली साई स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे आएगा, क्योंकि प्लस सी है ना। एक और पॉइंट, साई जो एक्स वाई जेड था, इट इज द, अगर मैं इसको रेडियल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करूं, रेडियल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। मैं समझाता हूं क्या होता है। तो एक होता है रेडियल वेव फंक्शन और एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। ये जो है दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन and this is a radial wave function. Radial wave function depends upon r only, angular wave function depends upon theta and phi. तो यहां तो r से प्लॉट कर रहे हैं ना, तो ये एक किस्म का रेडियल वेव फंक्शन है, इसको r² लिखोगे तो भी चलेगा। समझाता हूं मैं, पहले ये समझ लो, psi की वैल्यू इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, then as the distance from the nucleus increases, value of psi decreases, ठीक है। और psi स्क्वायर का मैंने सिग्निफिकेंस बताया था आपको, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट एनी पॉइंट, इट इज प्रोबेबिलिटी of finding the electron at a given point. अब दूसरा प्लॉट 2s जो है
2s में क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, then no electron density, and then again it increases. Or electron is considered as a wave. Electron is considered as a wave, like crust and trough. ये प्लस है ना, प्लस मीन्स crust और माइनस मीन्स ट्रफ, वेव का क्रस्ट और ट्रफ है ना। तो अगर कहीं भी जीरो आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव है ना, अगर कहीं जीरो आ जाए तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब अगर यहां मैं साई की वैल्यू प्लस लूं तो बीच में तो जीरो आ गया, तो यहां वैल्यू क्या जाएगी साई की, नेगेटिव। तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन साई वर्सेस आर, तो it is like this. First it is near to nucleus, it is high, then it decreases, reaches zero, and then again increases. So it increases in the negative direction, keep in mind. क्यों नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि जीरो आने के बाद फिर बढ़ रही है, तो प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये इसको याद रखना है। और अगर हम प्लॉट करते हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो देखो ये तो प्लॉट ऐसे रहेगा, यहां जीरो होगा और फिर ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साई की वैल्यू माइनस है तो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये प्लॉट आएगा 2s के लिए, ये वाला 2s का साई वर्सेस आर, ये 2s का साई स्क्वायर वर्सेस आर। 2p इज डबल, L is 1 and value of m is -1, 0 and +1. So there are three directions. Shape is dumbbell, px if dumbbell is in x direction, that is px. If dumbbell is in y direction, that is py. If dumbbell is in z direction, that is called pz. Okay, px, py, pz. So plus minus, plus minus, plus minus. If we take this as direction, this one, so it is plus minus. Okay, but generally we use the positive direction as this y, so it is plus, it is minus, right? So px, py, pz. If dumbbell is in x direction, it is called px. If dumbbell is in y direction, it is called py. If dumbbell is in z direction, it is called pz. For value of m is -1 or +1. For py, value of m is +1 or -1. If it is -1, it is +1, and if it is taken as +1, so it is -1. But value of pz, for pz, m value is taken as 0. Keep in mind. For z direction, value of m is taken as 0. Done? Now let us plot the graph. ये shapes कौन जाएगी? डम्बल शेप है, डम्बल x डायरेक्शन में हो सकता है, डम्बल y डायरेक्शन में हो सकता है, डम्बल z डायरेक्शन में हो सकता है. So that is called px, py and pz. Right? Okay. Now this is the shape.
डंबल है, this is the nucleus. So if we plot the graph of 2p versus means psi for 2p versus r, then at the nucleus electron density is 0. It increases and then decreases. It increases and then decreases. Increases then decreases. So it is like this for the 2p. So psi square same graph, only for 2s it is different, but for 2p and 1s they are same because they are in the positive direction only. समझ गए? हाँ, अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज द एंगुलर नोड, और उसको बोलते हैं एंगुलर नोड बोलते हैं और बोलते हैं नोडल प्लेन. तो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल, जो भी एल की वैल्यू होगी. इसका मतलब जो P है उसमें कितने नोडल प्लेन आएंगे? 1. S में नोडल प्लेन 0, S में 0 और P में 1. ये देखो न्यूक्लियस ऐसे लाइन पास करो आप, ये प्लेन है ना ये, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0. बट अगर आप 2s तो स्फेरिकल है पूरा, तो कोई भी अगर प्लेन पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आएगी ना. नोडल प्लेन मींस द प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. कोई एक प्लेन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. ठीक है ना? तो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन में जो वैल्यू है यहां पे देखो 0 होगी, तो D के लिए कितनी होगी? 2. तो मैं लिख देता हूं, एक बार हटा दो, ये समझ गए होंगे. ओके, तो देखो पहला मैं लिखता हूं कि जब एक क्वेश्चन आए, ये सीधा क्वेश्चन होता है, आपको ये शेप्स बनानी है ना. रेडियल नोड जो है, और क्या बोलते हैं उसको? स्फेरिकल नोड्स. रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स, दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. ये फॉर्मूला है. और एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स, दैट इज इक्वल टू n. एंगुलर नोड और नोडल प्लेन्स के वैल्यू जो है उसके लिए l, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड्स जो है दैट इज n माइनस l माइनस 1. गॉट इट? ये फॉर्मूलाज है. ठीक है ना? जैसे मैं लिखूं 1s 2p और 3d इवन 4f, इन सब के लिए जो रेडियल नोड होंगे कितने होंगे बता सकते हो? ऑब्वियसली 0, क्योंकि s starts from 1, p starts from 2, d starts from 3, f starts from 4. इसके लिए n कितना है? 1, l0. इसके लिए n2, l1. इसके लिए n3, l2. इसके लिए n4, l3. सही है? तो फर्स्ट में ये फॉर्मूला नोट कर लिया. तो नोडल प्लेन अलग अलग होंगे इनके, नोडल प्लेन्स और एंगुलर नोड्स. क्या होता है ये? L. तो इसका कितना होगा? 0, 1, 2, 3.
spherical nodes और रेडियल नोड्स। फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। तो देखो 1 माइनस 0 माइनस 1, इसमें भी 0, दूसरे में 2 माइनस 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 माइनस 1 0। सो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड इन सब में क्या होगा, 0। और एंगुलर नोड और नोडल प्लेन तो सिंपली एल होता है। दैट्स इट। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। टुडेज होमवर्क, just calculate angular nodes and radial nodes for 5G, 3P, 4D and 5S। इनके लिए आप फाइंड आउट करोगे इन सब की n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू फॉर ऑल दीज सबशेल्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो यू नो d subshell, for d subshell l is 2. So what is the value of m? Minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2। ठीक है ना, there are 5 values, that means 5 orbitals are there in d subshell। there are 5 orbitals। ठीक है, out of these x y, if lobes are in between the axes x and y, so that is called dxy। if it is in between y and z, same shape, but now lobes are in between y and z, that is called dyz। if lobes are between z and x axis, that is called dzx। dxy, dyz, dzx। इनमें कहा है ये जो लोब्स हैं, एक तो ये शेप्स क्या होगी, डबल डबल, शेप इज डबल डबल, सामने दिख रहे हैं, है ना। बट इनमें लोब्स कहां हैं, इन बिटवीन द, और इनमें एंगल कितना बनाया, 45 डिग्री टू ईच एक्सिस, बीच कोई मिड में है ना ये। ठीक है, ओके। दूसरा, दो जो बाकी बचे हैं, तो एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें लोब्स कहाँ होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, जिसमें जो लोब है वो जेड एक्सिस पे होगा, और एक्स वाई प्लेन में रिंग होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जेड एक्सिस पे लोब, और इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये शेप्स हैं किसकी, डी ऑर्बिटल्स की, जिसमें ये तीन लोब्स जो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनमें लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में लोब्स आर ऑन द एक्सिस। अब आप लोग ये मत पूछना कि क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि these are drawn because of whole mathematics involved in it। साई स्क्वायर की वैल्यूज है ये,
जो स्पेस में उसने फाइंड आउट की और उनको प्लॉट किया, डॉट लगाता गया साई स्क्वायर जहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, तो उसको ये शेप्स मिली। ठीक है, दे आर प्रोबेबल बाउंड्रीज, दे आर नॉट एग्जैक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, और दूसरी बात, एक्स वाई का मतलब क्या है? देखो एक्स एक्सिस यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस माइनस, सो प्लस प्लस ये प्लस, प्लस माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इसमें क्या होता है कि सामने सामने वाले जो लोब्स हैं वो सेम साइन के होंगे। ठीक है, इधर सेम प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट? यही मल्टीप्लाई किया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, वाई 0 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई एक्सिस पे ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, इधर डी जेड स्क्वायर, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, और इन पे तो रिंग पे तो नेगेटिव होगा। समझ गए? तो ये हुआ इसका पूरा शेप्स, डबल डबल है। अच्छा, इनको स्पेशल नेम भी देते हैं। ऐसा आपने इस शेप का वो देखा है, पत्ता फूल देखा है, क्लोवर, तो इसको हम क्लोवर लीफ शेप भी बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और डी जेड स्क्वायर को डोनट शेप। लग रहा है ना डोनट की तरह? स्पेशल नाम भी है, पर अगर अगर जनरल पूछता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आप लोगे डबल डबल। ठीक है, अच्छा, अब x और y हो तो इसके लिए x ये प्लस 2 या -2, अगर सिर्फ y है z के साथ तो इसके लिए m क्या होगा, +1 और -1। dz, तो देखो m इज -1 और +1, देखो ये +1 होगा तो ये -1, ये -1 होगा तो ये +1, इसमें x और y दोनों आ गए, तो इसके लिए m क्या होगा, या -2 या +2, क्योंकि अगर इसका +2 लेते हैं तो इसका -2, इसका -2 तो इसका +2, और इसमें z आया सिर्फ, तो इसके लिए m क्या होगा, 0। तो अब एनर्जी जो है ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हमने किया था ना वो 1s 2s 2p 3s 3p, दैट इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। याद रखना, किसके लिए था वो, n+l रूल किया था ना, दैट इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब मैं लिख रहा हूं एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो याद रखना कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ऑन n ओनली। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ n पे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि देखो n इक्वल टू 1, तो देयर इज ओनली 1s, n इक्वल टू 2, तो 2s और 2p। तो याद रखना इन दोनों की एनर्जी क्या रहती है, सेम। 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ये याद रखना। और n इक्वल टू 3, तो 3s होगा, और क्या होगा, 3p और 3d, तो सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। n इक्वल टू 4, तो 4s 4p 4d
4f सबकी एनर्जी क्या होगी सेम। याद रखना अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s 2p की उससे ज्यादा, बट 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी इक्वल। मतलब ये ऑर्डर होगा फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, फॉर हाइड्रोजन एटम 1s lower than 2s 2p equal, less than 3s 3p 3d equal, ठीक है ना। फिर लेस 4s 4p 4d 4f सबकी एनर्जी सेम। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया मैंने, है ना। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, एक तो मैंने वो बताया था आपको शर्मा शर्मा, प्रसाद शर्मा, देवी प्रसाद शर्मा, देवी प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ देवी प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ देवी प्रसाद शर्मा, या स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल को और तरीके से करना है जो बुक में दिया हुआ तरीका, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, है ना। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स तो देखो आपको क्या करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f 3s 3p 3d, है ना। फिर 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f सो ऑन। अभी नीचे आएगा नहीं ये, नहीं तो 7s, ठीक है। तो देखो पहले आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p and 3s, फिर 3p and 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, ठीक है। फिर 4f 5d 6p और इसके नीचे क्या चलेगा 7s, नहीं दिख रहा है तो भी पता चलेगा ना, 6s के नीचे क्या आएगा 7s, तो फिर आएगा 4f 5d 6p एंड 7s। उसके बाद 5f 6d और क्या आएगा 7p, 6p के नीचे, और इधर 8s, तो 7s के बाद 5f 6d, फिर नीचे 7p और 8s। दैट्स इट, समझ गए। तो मैंने ऐसे बताया था ना, शर्मा शर्मा, प्रसाद शर्मा प्रसाद शर्मा, देवी प्रसाद शर्मा देवी प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ देवी प्रसाद शर्मा फादर ऑफ देवी प्रसाद शर्मा, ठीक है। या स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। बच्चे बोले सर नहीं फालतू बोलो, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, बट इट्स नॉट ट्रू। दिल्ली पब्लिक स्कूल्स आर बेस्ट स्कूल इन द कंट्री, ठीक है। सो दे आर फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल्स। तो दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो जितना भी हमने कर लिया ये, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है एक्सरसाइज करनी है।